Now, without wasting any time, I would like to invite Omkar Singh, a final year student of BA History Honors, to introduce our eminent guest. Omkar. Thank you, sir. Hello and good morning to everyone present here. I am truly indebted and grateful to my teachers for providing me with this once-in-a-lifetime opportunity to introduce one of the stalwarts of modern Indian historical tradition, Professor Aditya Mukherjee. It is a matter of utmost privilege and honor for all of us to have him as our guest speaker. He is here today to share his invaluable thoughts on the topic Jawaharlal Nehru and the making of modern India. Professor Mukherjee acquired his higher education from St. Stephen's College, University of Delhi, and from JNU. He is the professor of contemporary Indian history at the Center for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, and also the director of Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Studies. His research interests are in modern business history and capitalist development and contemporary economy and politics. He is editor of Sage series in modern Indian history, published by Sage Publications, and also the regional editor of International Journal of Asian Studies since 2009. Professor Mukherjee has many accolades to his name. To name a few, he was invited as visiting professor at Duke University, United States of America in 1986, where he offered a postgraduate level course on colonialism and decolonization. He was awarded the Japan Society for the Promotion of Science Fellowship at the University of Tokyo in the year 1996. For his magnanimous contribution in the field of historical analysis, Professor Mukherjee was elected as the President of Indian History Congress in 2007. He also held the Visiting Fellowship at Institute of Advanced Studies, Sao Paulo, Brazil in June 2012 and was Visiting Professor to La Sapienza, University of Rome, Italy between May and August 2013. Some of the major works authored by Professor Mukherjee include India's Struggle for Independence, Imperialism, Nationalism and the Making of the Indian Capitalist Class, RSS School Text and the Murder of Mahatma Gandhi, the Hindu Communal Project, Congress and the Making of the Indian Nation, and the Communalization of Education, the History Textbook Controversy. He was also the editor of selected works of Jawaharlal Nehru from year 2009 to 2011. With the successful translation of India's struggle for independence into various regional languages, Professor Mukherjee has become a household name across the length and breadth of this glorious nation. Now, I would like to request our moderator, Dr. Saurabh Vajpayee, sir, to move ahead with today's webinar. Back to you, sir. Thank you so much, Omkar. तो ये पूरा सेमिनार चूंकि बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी हम बात करेंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे. So now I would like to request Professor Ashwini Sankar, teacher in charge, Department of History, Deshbandhu College, to formally welcome our eminent guest, Professor Aditya Mukherjee. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. Yes, sir. You are audible. Professor Aditya Mukherjee, friends, fellow colleagues, and my dear students. It is a matter of great delight for me to welcome Professor Aditya Mukherjee and you all to yet another edition of Origin. Theme of today's lecture is Nehru and the Making of Modern India. And to speak to us on this much pertinent topic is Professor Aditya Mukherjee, Professor of Contemporary and Modern Indian History. Friends, lest we forget, it is important for us to remember that at the cusp of independence, India was situated in a whirlpool of challenges of the unassailable kind. Resultant of prolonged and debilitating legacy of colonial exploitation, it was a nation faced with hunger, poverty, destitution, and illiteracy. This unenviable condition was further made unbearable by the communal holocaust following the partition of the subcontinent. In words different, the nation was standing at the crossroads. If on one side were the challenges of communal madness, communitarian violence, disintegration, suffering, and misery, on the other was the onerous task of national integration and nation building, making an implementation of an independent constitution, establishment of an ethos for liberal democracy, and the rule of law accompanied with the added calls for economic development, bringing into robust
and existence institutions of administration and governance, promotion of science, technology, education and healthcare, along with the alleviation of millions out of abject conditions of inhuman and poor in existence. In the midst of it all, Pandit Nehru took over the reins of the country as the first Prime Minister of independent India. As is evident, his challenges and objectives were no less than Herculean in nature. And the task for him was ever more difficult because by now, the voice of empathy and the light of reason and humanism, that was Gandhiji, had been extinguished through an insane act of communal frenzy. Now only teachings of Mahatma remained as a dependable source of navigation for him and the nation through this passage of darkness and depression. But how did that journey from darkness to light undertake itself? What were the pitfalls in its way? What were its moments of triumph, turbulence, and despair? How did the first Prime Minister of India navigate the nation into attaining a respectable position in the Committee of Nations? These are some important and critical questions, and to educate us about all these, we have amidst us today Professor Aditya Mukherjee. In an academic career spanning almost half a century, as stated by the student, he has served at eminent institutions, foremost among them being Center for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, in various capacities, both as an academic and also in other positions of academic administrative responsibilities. For long, he was the director of Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study. He was a visiting professor at Duke University in 1986 and a JSPS fellow as well as Japan Foundation fellow at University of Tokyo, Japan in 1996 and in 1999-2000 respectively. He has also served as visiting fellow at the Institutes of Advanced Study at Lancaster, United Kingdom, along with that of University of Sao Paulo in Brazil. As a higher academic cum research fellow, he has spent time at the Institute of Advanced Studies at Nantes, France in 2010, and has further been a visiting professor at La Sapienza, University of Rome, Italy in 2013. Professor Mukherjee is the editor of Sage series of Modern Indian History, published by Sage Publications. In between 2009-11, he edited the selected works of Jawaharlal Nehru. Since 2009, he has served as member of Council of Indian Council for Historical Research. His academic interests and specialization traverses different and diverse fields, ranging from economic history with particular focus on political economy of development since the 20th century to that of business history, as well as contemporary economy and politics. He was president of Indian History Congress for Modern India in the year 2007-8. With such a vast experience and ever expansive and academic indulgence, it is but natural that Professor Mukherjee has been an author of many consequential and important contributions to the discipline of history. All of us may remember with cherish and delight the reading we had of India's struggle for independence, along with its sequels, India Since Independence. In equal measure, we feel indebted to him for giving us the extensively researched imperialism, nationalism, and the making of the Indian capitalist class, 1927 to 1947. Beyond this, he has co-authored History in the New NCERT books, a report and an index of errors, RSS, school texts, and the murder of Mahatma Gandhi, the Hindu Communal Project, along with a centenary history of Indian National Congress, 1964 to 1984, Volume 5. No talk about Professor Mukherjee can ever be complete without the mention of his timeless contribution towards the art of teaching history. In the long years dedicated to the pursuit of life of letters and excellence, he has trained generations of students and future scholars. Also, in this prolonged and illustrious career, he has traversed not only many different domains of scholarship, but activism too. Thus, in his academic commitments, do we find that rare combination of scholarship and activism, which has otherwise been described as a quintessential necessity of the making of an organic intellectual in whose life and work both theory and praxis find conjoint manifestation. Professor Mukherjee is one of the finest representations of that idea.
In congruence with this commitment, he has been at the forefront of a relentless struggle targeted towards fighting bigotry and communalism, along with the distortion and abuse of historical research and knowledge. In this regard, his leadership and contribution to the Delhi Historians Group committed towards salvaging historical knowledge from communalization is not only timeless, but worthy of emulation by us all. Friends, now without taking much of your essential time any further, I once again welcome Professor Aditya Mukherjee and request him to begin his talk and thereby enlighten and educate us rather, with his profound ideas and critical reflections. Thank you very much. Over to Professor Mukherjee. Professor Aditya Mukherjee, I invite you to please deliver your lecture. Thank you very much, Dr. Ashwini Shankar. I'm deeply embarrassed at the very kind words that you have had to say about me. I don't think I deserve any of that. Nevertheless, let me thank Dr. Shankar, Dr. Saurabh Bajpai, Dr. Suvrita, and all my friends in the faculty of Deshbandhu College for this opportunity to speak once again to the students of this premier college of Delhi University, named after C.R. Das, a major leader of our Indian national movement, a movement which we are now beginning to distort, which we are beginning to forget. And I'm glad that Deshbandhu College has asked me to speak. I'm very proud and I'm very thankful that they've had the courage and the wisdom to ask, to have a discussion on Jawaharlal Nehru in these days when he is demonized so widely. The organizers had requested me to speak both in English and Hindi. Hindi is not my mother tongue, so but I do speak Hindi. So what I will do is I will speak in English and will keep mixing it with Hindi, some sort of khichdi, of which I'm very proud. We have, after all, a very Sanji Virasat, as it is called. We are not a monolingual, mono-religious country, and that's what is the beauty of our culture. So I shall mix up my language and try to meet some of the demands that Dr. Shankar has made on me. As I was saying, that Nehru is being demonized today. उनका दैत्यकरण किया जा रहा है through the WhatsApp universities, through the social media that you are aware of, as well as by the speeches and sayings of elected leaders, major elected leaders that of the regime in power today. Lies, abuse are spread about Jawaharlal Nehru through a propaganda machinery. इस किस्म का दुष्प्रचार किया जाता है कि हैरानगी होती है. He is shown as responsible for all the evils of this country, whether it be poverty, whether it be the problem of Kashmir, of China, of Goa, of lack of primary education, any problem that we have today. As you hear almost every day from political leaders, the responsibility goes back to Jawaharlal Nehru. One of the abuse, interestingly, is that Jawaharlal Nehru asli mein Musalman the. If you watch social media, you will find so many stories about his parentage, about being Muslim, this, that, and the other, as if Musalman hona koi gunah hai. The very abuse itself tells you of the mentality of the people who are abusing Jawaharlal. But this is not only at the social media level. The ICHR, the premier institution which is to guide the discipline of history, the Indian Council for Historical Research, they were in a poster which was to celebrate the 75th year of India's independence. They put the pictures of various leaders, the Mahatma Gandhi, Subhash Bose, etc. And they forgot to put Jawaharlal Nehru's photo on that poster. And instead, they put the poster of Savarkar, a person, as you know, who repeatedly,
asked for forgiveness from the British, उनसे माफिया मांगी बहुत बारी, और अंग्रेजों के भत्तों पर जिए. He took money from them to survive, and after coming out of prison played a politics of collusion with the British rather than fighting with the British. His photograph comes in, and that of Jawaharlal Nehru is removed. I'm starting with this because so that when we talk about the positive part, you realize that how important it is to remember the positive part. Things have gone so bad that one leader of the current political party, and this was reported in an RSS journal, actually said that Godse made a mistake. He should have shot Jawaharlal Nehru. He was the greater evil. Jis tarah, the manner in which the abuse of Nehru occurs was not even done by the British. The British against whom Nehru fought for 30 long years, from about 1915 till independence. And out of that 30 years, 9 years he spent in jail. This is not mentioned when you hear this propaganda about Jawaharlal Nehru. जिस तरह से अंग्रेजी सांप्रदायिक ताकतों ने नेहरू को कभी नहीं गालियां दी, उससे बहुत ज्यादा गुना गालियां जो है हमें अब सांप्रदायिक ताकतों से नेहरू को दी जा रही हैं. आपको ये याद रखना बहुत जरूर है कि सांप्रदायिकता जो है वो साम्राज्यवादी हुकूमत के अंडर ग्रो किया है, ये उनके सपोर्ट से ग्रो किया है. इन दोनों की पार्टनरशिप थी. हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय में अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया. उनका एक अम्बिलिकल कॉर्ड का लिंक है, गर्भनाली का संपर्क है. ये हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता कई बारी राष्ट्रवाद के नारों पे वापस आने की कोशिश करता है. पर आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रवाद के साथ सांप्रदायिकता का कोई रिश्ता नहीं था और ना है, क्योंकि सांप्रदायिकता राष्ट्र को तोड़ती है. टू कम बैक टू नेहरू, अगर नेहरू इतने ही खराब थे जितना कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तो हमें ये सोचना चाहिए that why is it that Mahatma Gandhi, the father of the nation, chose Nehru as his successor? I'll quote you from a speech that Mahatma Gandhi gave at the AICC in 1942 on 25th January, in which he makes this comment that Nehru will be my successor. I'm quoting him. He says, somebody suggested that Jawaharlal Nehru and I were estranged. This is baseless. You cannot divide water by repeatedly striking it with a stick. अब पानी, गांधी जी बहुत इडियोमैटिकली बात करते थे. वो कहते पानी को आप बार बार डंडा मार के नहीं उसको डिवाइड कर सकते. तो वैसे ही रिश्ता जो मेरा नेहरू के साथ है, उसको आप डंडा मार के नहीं तोड़ सकते. ये बात याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में, इस समय, the manner in which our national movement itself is being trivialized, is being demonized. Not Jawaharlal Nehru himself. National movement का ही मजाक बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का मजाक बनाया जा रहा है, और ये बताया जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो सारे लीडर थे वो एक आपस में ही लड़ते थे. नेहरू सुभाष बोस से लड़ रहे थे, गांधी नेहरू से लड़ रहे थे, नेहरू गांधी से लड़ रहे थे, भगत सिंह गांधी से लड़ रहे थे, पटेल और नेहरू की लड़ाई थी. आपको लगेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे लीडर जो आपस में लड़ाई ही करते रहते थे. ये जो एक मानसिकता फैलाई जा रही है, ये इसके पीछे ये आइडिया है कि नेशनल मूवमेंट को ही आप रिड्यूस कर दो, क्योंकि उस मूवमेंट में सांप्रदायिक ताकतों का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उस मूवमेंट का ही मजाक बना दिया जाए. एक झटके में उनको सबको भिखारी बना दिया, ये कह के कि हमें आजादी भीख में मिली. भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब भिखारी थे, क्योंकि आपने कहा हमें तो आजादी भीख में मिली. असली आजादी तो आपको पता ही कब मिली, 2014 में. उसके पहले तो आजादी नहीं मिली थी. ये सिर्फ स्टारलेट, ये जो है क्या नाम, कंगना राउत वगैरह, ये लोग नहीं कहते हैं. अगर वही लोग कहते रहते तो हमें कोई परेशानी नहीं थी. ये सीरियस कॉन्वर्सेशन में आ जाता है. इलेक्टेड लीडर्स जब ऐसी बातें करते हैं
तब हमको इतिहास में वापस जाना जरूरी है। अब आते हैं महात्मा गांधी के स्पीच पर। वो क्या कहते हैं? As I said, you cannot divide water by repeatedly beating it with a stick. It is difficult to divide us. और ये जो है ना, ये मानसिकता कि एक लीडरशिप के अंदर डिविजन्स हो सकते हैं, परंतु डिविजन्स और डिफरेंस होने के बावजूद भी वो इकट्ठा काम कर सकते हैं, ये जो आजकल के कई जो पेटी लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं सकती। जवाहरलाल नेहरू ने एक पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी, एक पूरी किताब जो महात्मा गांधी की क्रिटिक था। Yet, as Gandhi says, they could work together. ये जो सुभाष बोस के इतने डिफरेंसेस हुए कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के उन्होंने दूसरी पार्टी बना दी, पर जब उन्होंने आईएनए बनाया तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने ब्रिगेड्स के नाम क्या रखे? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। और उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि जब भारत आप पहुंचोगे, भारत के सॉइल में, तो कमांडर इन चीफ आपका मैं नहीं होऊंगा, महात्मा गांधी होंगे। ये होती है लीडरशिप। आप उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, इस लेवल के लीडर्स को। तो हमें समझना जरूरी है यंग पीपल को कि हम किस स्तर के लोगों की बात कर रहे हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सामने एक वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स के बारे में कुछ बताऊं। तो गांधी जी कहते हैं, आई हैव ऑलवेज सेड that not Rajaji, that is not C. Raja Gopalachari, not सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम लेके कह रहे हैं क्योंकि ये इनके महात्मा गांधी के बहुत क्लोज थे और वो बहुत, they were very tall leaders, highly educated, very tall leaders. वो कहते हैं not Rajaji, not सरदार वल्लभ भाई पटेल, but Jawaharlal will be my successor. When I am gone, he says, he will speak my language. और फिर मैं थोड़ी पूरा लेटर नहीं बता रहा हूं, आखिर में वो कहते हैं, even if this does not happen, that is even if Jawaharlal does not speak my language after I die, I would at least like to die with this faith. Now, what was it about that Jawaharlal कि गांधी जी कहते हैं कि उनको अंतिम तक ये विश्वास है कि मरने के बाद भी कि जवाहरलाल मेरी भाषा में ही बोलेगा। Why did the father of the nation have this faith in Jawaharlal? इसके दो कारण हैं मेरे हिसाब से। पहला कारण यह है that Jawaharlal Nehru quintessentially represented all the values of the freedom struggle. हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो मौलिक अवधारणाएं थी, जो उनकी जो एक परिकल्पना थी कि आजाद भारत क्या बनेगा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने आइडिया ऑफ इंडिया कहा, तो उसमें गांधी जी का विश्वास था कि उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू अहम रहेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। एंड व्हाट वर दोज वैल्यूज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया? क्योंकि सभी आज आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, पर लेट मी क्विकली फॉर यू इन 3 minutes डिफाइन व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू लड़े। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इस पे एक कंसेंसस था। ये नहीं था कि ये सिर्फ गांधी जी का या नेहरू जी का आइडिया था। इस अभी जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, जो 5-6 एलिमेंट्स ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया, इसमें सब भगत सिंह, गांधी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सुभाषाइट्स, पटेल, हर एक की इसमें सहमति थी। सिर्फ जो सांप्रदायिक थे या जो लॉयलिस्ट थे, अंग्रेजों के जो सपोर्टर थे, उनके सिवा सारी नेशनलिस्ट स्पेक्ट्रम में, जो एक इतना वाइड स्पेक्ट्रम था नेशनलिज्म का, कोई एक लीडर से नहीं बना, ये 100 साल का मूवमेंट था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास मूवमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। एक 100 साल की मूवमेंट में 100 हजारों लीडर्स निकले हैं। इन सब में कंसेंसस था इस आइडिया ऑफ इंडिया में। और वो आइडिया ऑफ इंडिया अगर संक्षेप में बोला जाए तो उसके 4-5 वैल्यूज हैं, 4-5 मुख्य मौलिक मूल्य हैं। नंबर 1 कि आजाद भारत जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ रिलायंट होगा। मतलब आजादी और आत्मनिर्भरता, कि दूसरे की गुलामी में नहीं रहेंगे, ना ही किसी को गुलाम बनाएंगे,
और अपने आप पे हम आत्मनिर्भर रहेंगे। नंबर 2, भारत जो बनेगा वो एक लोकतंत्र होगा, इट विल बी अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का विजन 1890s में तिलक कह रहे हैं कि जो फ्यूचर इंडिया होगा, he was arguing for a constituent assembly bill, वो कहते हैं उस वक्त कि we will have an adult franchise। एडल्ट फ्रेंचाइज दुनिया में अभी कहीं नहीं था, अभी कई दशक बाद एडल्ट फ्रेंचाइज कहीं आने वाला था, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। मतलब हर एक इंसान, एवरी सिटीजन, irrespective of religion, caste, language, gender, will have the same rights। तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल शुरू से ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक मौलिक, लोकतंत्र एक मौलिक विचार था। इससे जुड़ा हुआ है तीसरा, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय में ये दोनों शब्द जो हैं इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते थे। सेक्युलर डेमोक्रेसी कहा जाता था, क्योंकि आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते अगर आप सेक्युलर नहीं है, और आप सेक्युलर नहीं हो सकते अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है, पर जो हिंदू है उसकी वोट जरा डबल है और जो मुस्लिम है उसकी आधी है, और तीसरों की तो भूल ही जाओ। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। तो डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म आर नेसेसरी कॉम्बिनेशंस। तो तीसरा धर्मनिरपेक्षता, दैट इज ओके, इंक्लूसिवनेस। चौथा जो बेसिक आइडिया था भारत नेशनल मूवमेंट का, वो था प्रो पुअर ओरिएंटेशन, गरीब नवाजी। सोशलिज्म एक स्ट्रॉन्ग आइडिया था, पर उस पर कंसेंसस नहीं था। सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट भी थे, परंतु कंसेंसस इस पे था कि गरीब नवाजी होगी। दादा भाई नेहरू जी, जिसको नरमपंथी मॉडरेट कहते हैं, उनकी पहली किताब का टाइटल ही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरसी दत्त, दादा भाई नेहरू जी, राणा डे, आप इनको पढ़ लीजिए 19वीं शताब्दी में। वो उनकी जो लेखन है, उनका जो आर्गुमेंट है, उसमें सबसे पहला आर्गुमेंट को ये है कि हमको अंग्रेजों को क्यों निकालना है, क्योंकि इससे हमारे देश में गरीबी फैल रही है। ठीक है ना। ये चौथा था। और पांचवा जो था वो था कि जो फ्यूचर इंडिया होगा वो एक आधुनिक सोच पर बेस्ड, साइंटिफिक थिंकिंग में, मॉडर्न थिंकिंग में, मॉडर्न आउटलुक पे, वैज्ञानिक साइंटिफिक थिंकिंग पे, रादर देन बेस्ड ऑन ऑब्सक्यूरेंटिज्म, वाइल्ड फेथ, अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं होगा। एक मॉडर्न होगा, जिसको नेहरू ने बाद में साइंटिफिक टेम्पर बोला। ये थी परिकल्पना। और अगर 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये जो परिकल्पना थी, ये एक यूनिक थी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। हमें अपने आप पे बहुत प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि भारतवर्ष ने ये डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म बनाया, जो कि कहीं दुनिया में था ही नहीं। जब नेशन स्टेट्स बने सारे दुनिया में, पहले एम्पायर्स होया करते थे, नेशन स्टेट्स नहीं होते थे। ये नहीं है कि नेशन स्टेट्स टाइम मेमोरियल से ही थे। नेशन स्टेट्स जैसे हम इनको जानते हैं, ये सब बनते हैं आधुनिक पीरियड में, राइट, मॉडर्न पीरियड में बनते हैं। जब नेशन स्टेट्स बनते हैं, यूरोप में पहले बनते हैं, तो एम्पायर टूटने से बनते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये सब एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये टूटते हैं और ये नेशन स्टेट्स बनते हैं। तो वो नेशन स्टेट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन रिलीजन, वन लैंग्वेज। कैथोलिक फ्रांस, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, unification of Germany on the basis of German speaking people, unification of Italy on the basis of Italian speaking people। उस समय, ये मैं 19वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस समय हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो इमेजिनेशन ऑफ नेशन है, वो इट विल सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। हम विविधता को ही हमारे नेशनलिज्म का बेसिक मूल्य मानेंगे, ना कि हम कहेंगे कि हम एक मोनोक्रोमैटिक, एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा का देश बनाएंगे। ये एक यूनिक इमेजिनेशन था, और इसको दुनिया भर मानती है, आज तक मानती है। इसीलिए आजकल दुनिया हैरान है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया वाज द एग्जांपल टू द वर्ल्ड दैट हाउ पीपल ऑफ, we at the moment have more than 700 languages. Every conceivable religion in the world is here. How we can all live together.
तो ये इमेजिनेशन हमारे 100 साल की नेशनल मूवमेंट की थी। जो दूसरी इमेजिनेशन है, वन लैंग्वेज, वन रेस, वन रिलीजन, अगर उस पे आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट से कंट्रोल ना रखो तो वो उसका अंतिम नतीजा, उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो होता था, वो है हिटलर्स जर्मनी एंड मुसोलिनीज इटली। ठीक है, तो हमारी वो नेशनलिज्म नहीं है, ये हमको याद रखना है। हमारी नेशनलिज्म दूसरी नेशनलिज्म है, और उसी नेशनलिज्म के सबसे प्रमुख प्रवक्ता और उसके लड़ने के लिए अमंग द बेस्ट वाज जवाहरलाल नेहरू। और गांधी जी नेहरू को इसलिए चुनते हैं कि ना कि सिर्फ ये सारे वैल्यूज के लिए, क्योंकि जो मैंने 4-5 वैल्यूज बताए ना, सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्रो पुअर एटसेट्रा, साइंटिफिक टेम्पर, सब इसमें कंसेंसस था, पर कोई किसी एक में ज्यादा आगे बढ़े हुए थे, दूसरे में थोड़े कम थे, कोई लीडर किसी दूसरे विषय में बहुत आगे थे, तीसरे में कम थे, परंतु नेहरू इन 5 मूल्यों पे पूरी तरह से सहमत थे और उसके लिए लड़ते थे। और दूसरी बात ये थी दैट गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट नेहरू वुड बी क्रिटिकल इन इंप्लीमेंटिंग दीज आइडियाज इन द न्यू बॉर्न स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो काम जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिपेंडेंस के बाद जो उन्होंने किया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो our discussion starts with what were the challenges, as Dr. Shankar very eloquently, and I think he summarized almost every point that I am to make very, very beautifully. So it makes my task even more difficult, because how to add to all the things that he has already said. But as he said, that the challenges at independence were enormous. And how does Nehru deal with those challenges? What can we learn from them for today? Because whichever party you may belong to, whichever point of view you may have, nobody denies that we are now facing very difficult times. Now, what can we learn from our history, from the past from some of the tall leaders that our people have produced, the genius of the Indian people? क्या सीख सकते हैं उससे हम हमारे current problems को solve करने के लिए? सबसे पहला problem जो डॉक्टर शंकर ने शुरू में ही कहा कि आजादी के वक्त, at the very point of independence, the biggest challenge comes to the idea of India. अगर आप 1946 to 48 का पीरियड देखिए, 47 में आजादी मिलती है, 46 से 48 का पीरियड देखिए। 46 में ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होती हैं, उसके बाद नोआखाली में राइट्स होते हैं जहां को हिंदुओं का नरसंहार होता है खूब जोरों से, और फिर उसके रिटेलिएशन में बिहार में नरसंहार होता है मुसलमानों का। There are massive killings of Muslims and communalism spreads to the rural areas in a very big way. Then it is followed by the partition riots, where 5 lakh people were killed and about 60 lakh people became refugees. They became homeless. They were thrown out of their homes. So you can imagine the rise in the communal temperature. The bitterness, people have lost their close ones, their families have been ripped apart, so you can imagine the height of the communal temperature at that point of time, which is capped by the murder of the Mahatma in January 1948 by Nathuram Godse, जिनकी आजकल पूजा भी करी जाती है, मंदिर बनाए जा रहे हैं जिनके नाम पे आजकल, शर्म की बात है, जिनका लिंक, जो कि ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बताया नहीं जाता है, इसलिए हमको आपको बताना है कि गोडसे कौन थे, क्या एक जस्ट वन मैडमैन? इसके बारे में नेहरू बहुत लिखते हैं, मैं उनको बताऊंगा अभी 1 मिनट में आपको। तो गोडसे had strong links with the Hindu Mahasabha and the RSS and was a follower of Savarkar. As ये सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं मैं, सिर्फ बड़ी बड़ी स्टैच्यूज नहीं बनानी होती हैं, वो लोग जो बड़े बड़े स्टैच्यूज वाले हैं वो क्या कहते हैं, उनकी बात भी हमें सीखनी है। सरदार पटेल को मैं कोट कर रहा हूं, वो as deputy prime minister and as home minister and as a very successful criminal lawyer, वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आफ्टर लुकिंग इनटू गांधी जी's murder,
I have no doubt, he says, that it was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that hatched the plan, the conspiracy, and saw it through. So it was a conspiracy and it was seen through, and the father of the nation was killed. तो ये है एक सिचुएशन. इस सिचुएशन में जिसमें जिसको डॉक्टर शंकर ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया, होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन, मतलब एक जो दंगे फसाद से एक प्रलय की तरह एक सिचुएशन था. उस सिचुएशन से को हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने कैसे डील किया, क्योंकि इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि उसी किस्म का सिचुएशन अब फिर से आजकल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं. उस लेवल का नहीं है, पर अगर उस लेवल पे क्या किया था लोगों ने, हम अगर देखें तो शायद अभी भी हमें कोई रास्ता दिखे. गांधी जी क्या कर रहे थे? ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है 46-47. One of the biggest events in 20th century world history. एक बारी कॉलोनियल एम्पायर इंडिया की टूटती है तो विश्व में कॉलोनियलिज्म टूट जाता है. एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे देश आजाद होने लगते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूछिए सारी दुनिया में. तो इट वाज अ वेरी बिग इवेंट. उस एम्पायर का जहां पे कभी सूरज नहीं डूबता था, द सन ऑन विच द ब्रिटिश एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट, वो उखड़ने वाला है. और उस मूवमेंट के जो इसको उखाड़ रहा है, उसके जो सबसे बड़े प्रमुख नेता थे, लीडर, वो कहां थे जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है? वो नोआखाली के गांव में, नोआखाली का नाम भी नहीं जानते लोग, एक रिमोट पार्ट ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल, जहां पे राइट्स हो रहे थे, वो वहां पे गांव में घूम रहे थे अकेले, पैदल. एक रात एक गांव में सोते थे, अगले दिन, और सिर्फ ये मैसेज लेके कि ये कम्युनल बिटरनेस एंड हेट्रेड एंड मर्डर जो हो रहा है ये गलत है. उनको नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने कहा कि गांधी जी, इस वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, आप तो उधर बैठे हैं, हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर? गांधी जी का जवाब था, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जितनी जरूरत है मैं उतना रहूंगा. और आप सुन के हैरान होंगे कि गांधी जी नोआखाली में 4 महीने रहे. From November 46 till March 47, he was touring Noakhali to contain the violence, to contain communalism. वो कहते हैं, what use is this independence if the soul of India has been destroyed? ये आजादी का मतलब ही क्या है अगर भारत की आत्मा जो है वही आपने नष्ट कर दिया. और भारत की आत्मा उनके हिसाब से था यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इसे अगर आपस में सद्भावनी ही नहीं बचा तो क्या, तो उस आजादी से हम क्या करेंगे? ये तो नहीं. उसके बाद गांधी जी वहां से बिहार जाते हैं, कलकत्ता आते हैं, और फिर दिल्ली आते हैं, जहां पे आप जानते ही हैं कि आजादी के टाइम पे कितने राइट्स हो रहे थे. उनका आखिरी फास्ट भी जो था वो इसी पे था, कम्युनल हेट्रेड को रोकने के लिए. उनके विषय में माउंटबैटन ने बहुत फेमस लाइन था उनका, that गांधी जी was like a one man बाउंड्री फोर्स. गांधी जी को कलकत्ते में सुहरावर्दी ने बुलाया आजादी के टाइम पे कि आप यहाँ पे रहिए, हमें डर है कि पार्टीशन होएगा तो यहाँ पे कलकत्ता में रिवेंज किलिंग्स होंगी और बहुत लोग मारे जाएंगे. गांधी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, आप मेरे साथ चलोगे. और एक आदमी नहीं मरा. तो उसके बाद ही माउंटबैटन ने कहा था, ही इज लाइक अ वन मैन बाउंड्री फोर्स. ये तो गांधी जी की बात. नेहरू क्या कर रहे थे? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 46 में, जबकि ये बिहार में किलिंग्स हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ. तो नेहरू क्या करते हैं, बंगाल में तो मुस्लिम लीग सपोर्टिंग पार्टी थी, यहाँ पे बिहार में तो कांग्रेस की सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, बट जो भी है कांग्रेस थी वहां पे. तो बिहार में नेहरू क्या करते हैं, वो अपनी पूरी कैबिनेट को लेके, मैं नाम बताता हूं कौन किस किस को लेके, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, सबको लेके वो बिहार पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ बैठे रहेंगे
जब तक ना ये राइटिंग रुकती है। और वो इतनी मैसिव फैली हुई राइटिंग थी, उसको वो रोकते हैं और वो कहते हैं नवंबर 1946 में, आई विल स्टैंड इन द वे ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स, members of both communities will have to tread over my dead body before they can strike at each other. क्यों मैं बता रहा हूं ये? What a contrast. दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर दादरी हो जाता है, जहां पे एक भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का सोल्जर, हमारे एक सैनिक के पिता को उनके फ्रिज में क्या मीट है कि नहीं है, उसके सस्पिशन में घसीट के रास्ते में उनको पीट पीट के मार दिया जाता है। दिल्ली के पास ही मुजफ्फरनगर होता है, जहां से एथनिक क्लेंजिंग हो जाती है एक कम्युनिटी की, कि बाहर निकाल दो इनको, ये नहीं रहेंगे यहाँ पे। गुजरात का जेनोसाइड हो जाता है। और वेयर आर पॉलिटिकल लीडर्स, है ना? तो कुछ जो 46-48 का पीरियड है, उससे शायद हमें कुछ सीखना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट, नेहरू जी गांधी की जो असैसिनेशन है उसको, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि ही डजंट सी इट जस्ट एज एन एक्सीडेंट, वन मैडमैन। नेहरू जी कहते हैं he sees the assassination as an attempt to change the nature of the Indian state, to change the idea of India. क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया जिससे 100 साल की लड़ाई लड़ी गई, उसी से तो आजाद भारत बनेगा ना। परंतु नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी के असैसिनेशन से ये कोशिश करी कि जो भारत अब बनेगा वो आइडिया ऑफ इंडिया का भारत नहीं, एक दूसरा भारत बनेगा, एक दूसरे परिकल्पना का भारत। He writes to the chief ministers on 5th February 1948, गांधी जी की हत्या के shortly afterwards, वो लिखते हैं, this was a deliberate coup d'etat. A deliberate coup d'etat was planned involving killings of several persons, not only in the Mahatma, and the promotion of general disorder to enable an organization, and he names it also, I don't have to name it for you, to seize power. मतलब ये जो एक सिचुएशन हो गया था डिसऑर्डर का, कम्युनल टेम्परेचर्स वेरी हाई का, ये एक मौका देखा सांप्रदायिक ताकतों ने कि ये मौका है कि अब जो भारत बनेगा वो पाकिस्तान का मिरर इमेज बनेगा, पाकिस्तान की छवि में भारत बनाएंगे हम। अब पाकिस्तान बना है इन द नेम ऑफ इस्लाम, हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। पर ये हिंदू राष्ट्र तो नेशनल मूवमेंट की परिकल्पना में कभी था ही नहीं, वो तो एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना थी। तो इसको नेहरू जी कहते हैं ये कू की एफर्ट थी कि इस भगदड़ में के बीच में आप किसी तरह पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को ही उल्टा कर दो, एंड यू क्रिएट अ हिंदू इंडिया एज अ रिफ्लेक्शन और अ काउंटर पार्ट ऑफ अ मुस्लिम पाकिस्तान। बट हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंक्लूडिंग नेहरू, दे वर नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन। क्या करते हैं वो? हमारे बहुत सबसे ऊंचे स्टैच्यू वाले सरदार पटेल क्या करते हैं? जो एज आई सेड होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो नेहरू के सपोर्ट से ही पुट्स 25,000 आरएसएस पीपल इन जेल। ही बैन्स द आरएसएस। ही अक्यूजेस देम ऑफ सेलिब्रेटिंग गांधी जी's मर्डर। मिठाई बांटते थे वो, कहते हैं। ये सरदार पटेल के वर्ड्स है, मेरे नहीं है। उनके स्टैचू के नीचे लिख देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो पहला इलेक्शन हुआ आजादी के बाद, अब याद रखिए पहला इलेक्शन 3 साल के अंदर हो रहा है। 47 में आजादी मिलती है, 46 to 48 ये रायट सिचुएशन चल रहा है, होलोकॉस्ट जिसको डॉक्टर शंकर डिस्क्राइब कर रहे हैं करेक्टली। उस सिचुएशन के बाद अब 3 साल के अंदर एक पीसफुल इलेक्शन करते हैं। We should be proud of this. ये तभी हो सकता था अगर आपकी एक विरासत हो, 100 साल की नेशनल मूवमेंट की विरासत, कि आप 3 साल के अंदर एक पीसफुल इलेक्शन करते हैं जिसमें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको आप बुरी तरह पिछड़ देते हैं। कैसे होता है ये जो पहला इलेक्शन है, जवाहरलाल नेहरू टर्न्स इट इनटू अ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब एक सिंगल इशू, बेसिक इशू पे इलेक्शन है।
वो इशू उनका ये है कि जो अब हम भारत बना रहे हैं, क्या वो सेक्युलर भारत बनेगा? विल वी मेक अ सेक्युलर इंडिया और विल वी मेक अ हिंदू राष्ट्र? विल वी बी द काउंटर पार्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान के जैसे बनना चाहते हैं या हम एक दूसरे किस्म का देश बनना चाहते हैं? He traveled 40,000 kilometers all over the country. और उस वक्त 8,000 करोड़ के प्लेन नहीं होते थे. He spoke to 3.5 million people, 3.5 crore. 1 out of 10 people he spoke to directly, trying to convince them कि हम कैसा भारत बनाएंगे. और नतीजा क्या होता है? ड्रामेटिक रिजल्ट, कमाल का नतीजा होता है कि सारे जो कम्युनल फोर्सेस थे, मुस्लिम लीग तो चली गई उधर पाकिस्तान, जो हिंदू कम्युनल फोर्सेस थे, हिंदू महासभा, जनसंघ, रामराज परिषद एटसेट्रा, सब मिलके they could get only 6% of the votes. Only 10 out of 489 seats. The people of India overwhelmingly voted for a secular India. And this is 3 years after the rioting. ये एक सिग्निफिकेंट बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए. आज तक भी, उस इलेक्शन के बाद आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा गया है जिसमें हमने सेक्युलरिज्म को एक बेसिक इशू बना के रखा है कि ये इलेक्शन जो है, ये इसमें हम देखेंगे कि सेक्युलरिज्म इज द इंपॉर्टेंट इशू. जबकि आप देख ही रहे हैं कि वी ऑलमोस्ट रीच अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन दीज डेज. आंतरिक युद्ध की एक सिचुएशन होती जा रही है जहां पे ओपन कॉल्स फॉर जेनोसाइड किए जा रहे हैं. ओपन कॉल, नरसंहार के कॉल हो रहे हैं कि मार दो अल्पसंख्यकों को, लाखों के नंबर पे मार दो, पैसे खर्च के बड़े महंगे महंगे बंदूकें खरीदो ताकि अल्पसंख्यकों को मार दे. ऐसे ओपन कॉल हो रहे हैं, पुलिस देखती खड़ी है. इस सिचुएशन में भी हम इसको सेंट्रल इशू नहीं बना रहे हैं. हम अपने इतिहास से सीख नहीं रहे हैं. और इस इतिहास की सीख में एक जवाहरलाल नेहरू की एक और कमेंट भी मैं आपको कोट कर देता हूं उस वक्त का. वो कहते हैं, a big lesson to be learned. He says, if fascism ever came to India, it will take the form of majority communalism. वो कहते हैं अगर फासीवाद कभी भारत में आई, भगवान करे ना आए, कि कभी आई, अगर लोकतंत्र नष्ट होगी तो वो बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता से नष्ट करी जाएगी. ये भी एक वार्निंग हमें नेहरू जी से याद रखना चाहिए. Second lesson to be learned. The first lesson is, as I said, idea of India का secularism का lesson था. Second lesson is how to build democracy. What do we learn from Nehru on democracy? फिर क्यों जरूरत पड़ गई डेमोक्रेसी में बात करने की? The world no longer, believe you me, thinks India is a full democracy. They do not accept us as a full democracy. डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारा रैंकिंग हैज फॉलन टू द 53rd रैंक. 53वां नंबर है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में. वी आर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, खोट वाली डेमोक्रेसी. द स्वीडन बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट डिस्क्राइब्स एज एन इलेक्टरल ऑटोक्रेसी. मतलब सिर्फ चुनावी लोकतंत्र है, असली में लोकतंत्र नहीं है. चुनाव से तो हिटलर भी जीत गए थे. लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है. यह हमको अब सिखाया जा रहा है हिंदुस्तान को. और ये कहते हैं, ये मेरे वर्ड शब्द नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं. वो जो डाउनग्रेडिंग हुई है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इंडेक्स में, उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों डाउनग्रेड किया जा रहा है इंडिया को. वो कहते हैं गवर्नमेंट प्रोमोटेड एंटी माइनॉरिटी फीलिंग्स बढ़ाई जा रही है, नंबर 1. दूसरी, डिक्रीज इन सिविल लिबर्टीज, नागरिक की स्वतंत्रता को घटाया जा रहा है. मानव ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार को घटाया जा रहा है भारतवर्ष में. और वो कहते हैं, आई एम कोटिंग द वीडेम इंस्टीट्यूट, डिमिनिशिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन of the media and civil society have gone the furthest in the last few years. ठीक है. एक और भी इंडेक्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स. उसमें
फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स, जर्नलिस्ट की आजादी की जो इंडेक्स है, उसमें भी भारत अब नीचे से गिनती आती है, भारत की ऊपर से नहीं। अब सबसे नीचे चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि भारत उसके आसपास कहीं घूम रहा है। शर्म की बात है। इस सिचुएशन में हमें सोचना चाहिए कि हम नेहरू जी से क्या सीख सकते हैं। फॉर नेहरू, डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज वर नॉन नेगोशिएबल। इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। अगेन, Nehru ji could not put it as beautifully as Gandhi ji used to put it. Gandhi ji, as I said, had a tremendous capacity to use beautiful imagery to bring basic points in simple words to the common people of India. Gandhi ji कहते थे, civil liberties and the freedom of speech is the water of life. And he said, have you ever heard of water being diluted? अब पानी को तो नहीं ना डाइल्यूट कर सकते हो, दूध को कर सकते हो, किसी और चीज को कर सकते हो। मतलब इट इज नॉन नेगोशिएबल। सिविल लिबर्टीज इज दैट इंपॉर्टेंट। ये गांधी जी और नेहरू के विश्वास है। नेहरू कहते हैं, इफ सिविल लिबर्टीज आर सप्रेस्ड, अ नेशन लूजेस ऑल वाइटैलिटी। 1936 में वो सिविल लिबर्टीज यूनियन बनाते हैं नेहरू। फ्री प्रेस का मतलब क्या है? नेहरू कहते हैं, he says free press means allowing the severest criticism of oneself. He says free press where you are being praised by the press, वो कौन सी free press हुई? free press वो press है जो आपको severely criticize कर सकता है। और जब severe criticism नहीं होता था तो नेहरू जी by example criticized himself। ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि जब नेहरू जी को तीसरी बारी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था कांग्रेस का पार्टी का, तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अपने को क्रिटिसाइज करते हुए, चाणक्य के नाम से एक स्यूडोनिम यूज करके, जिसमें उन्होंने सारी चीजें क्रिटिसाइज करी कि कैसे वन मैन शो नहीं होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। अपने 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 आप को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन नहीं आ रहा है। ही बिलीव दैट द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज द ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन मुक्त का जो नोशन है, ये गलत नोशन है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि ऑपोजिशन होनी चाहिए, खुली ऑपोजिशन होनी चाहिए, नहीं तो कोई लोकतंत्र नहीं बच सकता। वो अपने, और वो इन प्रैक्टिस ये करते थे। अपना उनका जो नेहरू जी का जो पहला कैबिनेट है, पहला कैबिनेट आजादी के बाद, उसमें किन किन को डाल रहे हैं? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डाल रहे हैं, जो कि हिंदू महासभा के थे, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। अंबेडकर को डाल रहे हैं, जॉन मथाई जो टाटा के डायरेक्टर थे, सीडी देशमुख जो आईसीएस में थे, हर किस्म के लोगों को, क्योंकि देश जो आगे बढ़ना था सबको साथ लेके बढ़ना था। 1950 में when he was at the peak of his popularity and influence, he gives this speech, I am not afraid of the opposition in this country. I do not want India to be a country in which millions of people say yes to one man. I want a strong opposition. At another time, he says, again, warning of a situation which you will recognize. He says, this is too large a country with too many legitimate diversities. ये बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा legitimate विविधता है इसके अंदर. It is too large a country with too many legitimate diversities to permit any one so-called strong man, कि एक दबंग शक्तिशाली आदमी आके, who will trample over the ideas of everybody else. कहते ये ऐसे नहीं डेमोक्रेसी बनती है. This worship of one man who will solve all problems, एक messiah. तो ये, this is dangerous, he said, to democracy. It leads to dictatorship. Nehru ke, as I said, in practice, he built the institutions of democracy. Democracy सिर्फ इलेक्शन जीत के नहीं होता है. एक संस्थाओं, लोकतंत्र की संस्थाएं जो होती है, उनको मजबूत बनाने से डेमोक्रेसी बनती है. क्या संस्थाएं हैं लोकतंत्र की? सबसे पहले आप पार्लियामेंट को लीजिए. Nehru's respect for parliament was legendary. Even at an old age, he would sit through entire sessions. घंटों बैठते थे, और छोटे से छोटे पार्टी का आदमी अगर क्रिटिसाइज करता था तो उसको पूरा सुनते थे, उसका जवाब देते थे.
और उनको प्रेज करते थे। जब जनसंघ के मैंने आपको नंबर ही बताए थे, कुछ हाथ में गिनने वाले एमपीज थे, उस वक्त वो अटल बिहारी वाजपेयी की उठ के तारीफ करते हैं और कहते देखो ये यंग लड़का जो है किस मजबूती से अपना पोजीशन रख रहा है। ये नहीं कहते थे कि ये मेरे से अपोज कर रहे थे, उसको निकाल ही दो, देश निकाला करो, इनको पाकिस्तान भेज दो। Opposition to him was critical for the maintenance of democracy, and the parliament was the place where all opinions were to be expressed. ये नहीं है कि आप opposition को silence कर दीजिए, आप देखते ही हैं क्या हो रहा है, बोलने का मौका ही नहीं। बिल्स पास हो जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो जा रहे हैं जस्ट बाय रेज ऑफ हैंड्स। कैबिनेट सिस्टम, नेहरू जी, अब सीडी देशमुख की ऑटोबायोग्राफी में वो इसका जिक्र करते हैं, वो बताते हैं कि सीडी देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर थे करीब 6 साल नेहरू के कैबिनेट में। वो कहते हैं कि नेहरू यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर उनके पास जाके कहता है कि सर ये ठीक है कि नहीं, कहता है अपना डिसीजन खुद लेना सीखो, डोंट कीप रनिंग टू मी फॉर अप्रूवल। एक सीखने वाली बात है। अब वो कैबिनेट सिस्टम, मतलब वो वन मैन शो के बिल्कुल टोटल खिलाफ थे। प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, नेहरू के टाइम पे टोटल फ्रीडम। कोई कार्टूनिस्ट जेल नहीं जाता था, कोई कॉमेडियन जो क्रैक करने के पहले ही नहीं जेल में डाल दिया जाता था, जो आजकल हो रहा है। आर.के. लक्ष्मण इज लेजेंडरी। नेहरू का जितना मजाक लक्ष्मण ने बनाया शायद किसी ने नहीं बनाया होगा, किताबें छपी हैं उस पर दिस वॉज परमिटेड। द जुडिशरी वॉज इंडिपेंडेंट, एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश होती थी, ना कोई जुडिशरी पे दबाव डाला जाता था, और ना ही कोई लालच देके जुडिशरी पे असर करने की कोशिश कि भाई आपको राज्यसभा एमपी बना देंगे, या जस्टिस लोया को याद करना, है ना। तो इस किस्म की चीजें जवाहरलाल नेहरू के समय पे नहीं होती थी। क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, नेहरू यूनिवर्सिटीज भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इसीलिए जो डेमोक्रेसी को तोड़ते हैं वो पहले यूनिवर्सिटी को अटैक करते हैं। जब हिटलर पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी का उस वक्त जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी था, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, उस पर अटैक किया। उस किस्म का अटैक जो हमने मेरी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा। तो नेहरू जी क्या कहते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी में नेहरू जी का एक स्टैच्यू है, उसके नीचे ये लिखा भी है। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, फॉर टॉलरेंस, सहनशीलता, फॉर रीजन, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज, खुले सोच की रोमांच, फॉर द सर्च फॉर ट्रूथ। If universities discharge these duties adequately, then all is well with the nation and the people. और हम क्या देख रहे हैं? Universities are being silenced, brutal attacks, police lathi charges, arrests of students, intimidating of faculty. I can tell you from direct experience, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, हो रहा है 1916 से लेके। फोर्सिंग द चेंज ऑफ सिलेबाई, यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करेगी, कोई और बताएगा आपको कि आपका सिलेबस में क्या आएगा। आप 300 रामायण पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में? निकाल दिया। हमारी जो विविधता थी कि हम अपने रामायण के भी हमारे 300 वर्षन थे, उस पे एक प्रसिद्ध आर्टिकल रामानुजन का था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में, वो हटा दिया गया। ये एक सोचने वाली बात है। ये सिचुएशन अब आ गया है कि मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में, आपको याद दिलाना चाहते हूं क्योंकि आजकल की गोदी मीडिया तो सारी चीजें भुला देती है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार होना था, जैसे कि हमारा वेबिनार हो रहा है, और ये वेबिनार एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हो रहा था। टेक्नोलॉजी का फायदा है, ये 2 यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर रहे थे। सब्जेक्ट था साइंटिफिक टेम्पर, और बोलने वाले आप ही के यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध
अध्यापक प्रोफेसर अपूर्वानंद को बुलाया गया था और एक CSIR के बड़ा फेमस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का है, उसके एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर गौहर रजा को बुलाया गया था, पोएट साइंटिस्ट, इनको बुलाया गया था कि इस सब्जेक्ट पे बोले। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन से ग्रुप, दे वेंट टू द पुलिस एंड सेड कि ना जी ना, ये नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे तो यहाँ तो ये देशद्रोही है और यहाँ तो हंगामा हो जाएगा, इनको नहीं बोलना। द पुलिस, a senior police officer lands up at the university and tells the vice chancellor कि नहीं, आप ये सेमिनार नहीं कर सकते। तो VC वो कोशिश करते हैं, कहते नहीं जी कैसी है, यहाँ पे कोई है तो डिस्कशन है, ये है वो है, ये तो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, ये देखो कुछ नहीं होगा। कहते हैं अगर कुछ हुआ तो हम पर्सनली हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, आप जिम्मेवार होंगे। कहते ये नहीं हो सकता, दबाव डाला जाता है उन पे। और ये सेमिनार पर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था वो तो उस पे तो किसी का दबाव बनता नहीं है, उन्होंने कहा हम तो करेंगे। तो वो होता है, वेब में होता है। परंतु इस यूनिवर्सिटी में पुलिस ने आके इंश्योर किया कि कैंपस में कंप्यूटर्स, जहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कंप्यूटर्स ऑन करके कोई सुनेगा नहीं इसको। तो जब कहते हैं ना कि एडवेंचर ऑफ आइडियाज, खुले सोच को अगर आप इस तरह बंद करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव कर सकता। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ सॉवरेंटी। डेमोक्रेसी भी थोड़ा बहुत बोला, सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। देखिए ना, सिर्फ ट्रांसलेट कर देने, एक वर्ड को ट्रांसलेट करने से वो सच नहीं हो जाता है। जैसे कि आप सेल्फ रिलायंस को आपने आत्मनिर्भरता कहना शुरू कर दिया तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन गए। आत्मनिर्भरता कहने से हो नहीं जाता। जस्ट एज नेहरू अपने आप को फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द कंट्री कहते थे, उसको आप ट्रांसलेट करके प्रधान सेवक बना दोगे तो आप प्रधान सेवक नहीं बन जाओगे, है ना। तो उसको जो सेल्फ रिलायंस का, उसको एक ठोस बनाने की जरूरत थी, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो नेहरू कैसे करते हैं। नेहरू वॉज वेरी क्लियर एट इंडिपेंडेंस दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वॉज यूजलेस इफ यू डिड नॉट हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ही सेड जब भारत आजाद हुआ तो वी वर इन अ व्हाट इज कॉल्ड अ न्यो कॉलोनियल सिचुएशन। आप पॉलिटिकली तो आजाद हो गए, परंतु आप उन्हीं देशों पे डिपेंडेंट हैं जिससे आप आजाद हुए। क्यों? क्योंकि आजाद भारत अगर ग्रो करना चाहेगा, अगर आप प्रगति करना चाहेंगे तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करेंगे किस पे? फैक्ट्री बनाएंगे, मशीनरी चाहिए आपको। India produced no machinery at independence. 95% of your machine tools, आपके ये pliers और wrenches जो हैं, ये भी इंपोर्ट होते थे, 95%। तो आजादी कहां? 1945 से इंडस्ट्रियल डेलीगेशन भारत से जारी है सारे दुनिया में कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया जब बनेगा तो हम जब प्लानिंग करके जब इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो मशीन कहां से आएगी। तो इसको एक न्यू कॉलोनियल सिचुएशन नेहरू कहते हैं इसको तोड़ना है, नहीं तो हमारी आजादी नहीं बनेगी। और इसको तोड़ने के लिए वो एक स्ट्रैटेजी बनता है जिसको नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो कि सेकंड प्लान से इंप्लीमेंट होता है। महालनोबिस बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन थे और उनके साथ मिलके नेहरू का ये स्ट्रैटेजी बनता है, जिससे पब्लिक सेक्टर को इस्तेमाल करते हुए एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री पे एम्फेसिस रख के ग्रोथ की कोशिश होती है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन गुड्स, इनको बनाने की कोशिश होती है। और अमेजिंग रिजल्ट्स, जब कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ नेहरू जी के टाइम पे, फर्स्ट 40 years वर वेस्टेड, तो ये इतना एहिस्टोरिकल है, सारी दुनिया मानती है। डेवलपमेंट लिटरेचर अगर आप 1960s का पढ़ेंगे तो वो इंडियन एक्सपीरियंस को एक केस स्टडी बताते हैं कि हाउ अ नॉन टोटलिटेरियन सोसाइटी कुड मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक इंडिया। क्या होता है आप सुनिए, अब जब स्टैटिस्टिक्स सुनिए, बहुत कम बोलूंगा क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को समाओ एक इंपीरियलिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स है कि थोड़े बहुत अगर फिगर्स और ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स दे दो वो कहते ओए ये तो मेरे से नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एट इंडिपेंडेंस वी हैड टू इंपोर्ट वर्चुअली 100% ऑफ मशीनरी टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट।
That means to have any growth. Nehru Mahalanobis strategy say, through which they brought in, as I said, capital good industries. They set up things like Hindustan Machine Tools, Bharat Heavy Electricals Limited, Bharat Earth Movers, IDPL, etc., etc. जो ये सारे पब्लिक सेक्टर जो अब बेच दिए जा रहे हैं, दान किए दिए जा रहे हैं, ये इनके थ्रू से इन्होंने ये मशीनरी की शॉर्टेज कंटेन करने की कोशिश करी. नतीजा, by 1960, only 43% of the machines had to be imported, and by 1970 only 9% had to be imported. मतलब 91% जो मशीन की जरूरत है भारत को निवेश करके आगे बढ़ने का, इन्वेस्ट करके इंप्रूव करने का, 91% हम भारत में ऑलरेडी बना रहे थे within less than 20 years. Sorry, within 25 years of independence. It was a remarkable achievement. This is what is called the unstructuring of colonialism. Nehru's role was in unstructuring colonialism so that later on we could open up to the world as we did after 1991. ये एक जरूरी phase था. And he does it in a most brilliant manner. It is this which enables India to have an independent foreign policy. It is this which enables Nehru to lead the non-aligned movement of 100 countries. It is this which enables Nehru to cock a snook at both the superpowers and say कि हम ना तुम्हारे पीछे लगेंगे ना तुम्हारे पीछे लगेंगे. भारत एक आजाद independent foreign policy करेगा, and he collects 100 countries to do that. It is possible only if you yourself have the independence to manage without the support of the outsider. जैसे मनमोहन सिंह जी ने अभी एक स्पीच दिया आज, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को झप्पी पाने से, हग करने से या उनके साथ झूला झूलने से इंडिपेंडेंस नहीं आती है. इंडिपेंडेंस कम्स with something substantive. You have to actually make a transition, especially in your economy. And that is what Nehru succeeded in doing. But independence also meant not only the ability to invest, independence also meant food security. खाद्य पदार्थ होने चाहिए भारत के पास. हमारा जो बेगिंग बोल इमेज था कि अगर आप हमको फूड सप्लाईज नहीं दोगे तो यहाँ तो फैमिन हो जाएगा, जो सिचुएशन था. आजादी जब भारत को मिलती है तो 4 साल पहले उसके 30 लाख लोग भूखमरी से मर जाते हैं. ये हाल में तो आजादी मिलती है आपको, जो डॉक्टर शंकर ने आपको याद दिलाया किस सिचुएशन में मिलती है आजादी. तो उसको भी बदलना जरूरी था, और उसके लिए एक नेहरू प्लेड अ मेजर रोल. और यहाँ इसको मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक और झूठ नेहरू के बारे में बोला जाता है कि नेहरू जी ने जी इंडस्ट्री तो कर दी, वो तो मानना ही पड़ता, सबको दिख रहा है कि डैम्स बना दिए, इंडस्ट्रीज कर दिए, स्टील प्लांट्स हो गए, सब नेहरू के टाइम पे हुए. कहते पर उन्होंने एग्रीकल्चर को जी बिल्कुल, कृषि को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया. ये बहुत बड़ा झूठ है. 200 साल की जो जमींदारी सिस्टम थी भारत में, वो आजाद होने के 10 साल के अंदर खत्म हो जाती है. By 1957, the land reforms destroy the जमींदारी सिस्टम. भारत के प्रथम 3 जो प्लान्स थे, 5 पंचवर्षीय परियोजना जो थी, फर्स्ट 3 प्लान्स, in these 3 plans, Indian agriculture grew. इसकी जो ग्रोथ रेट थी was 8 times higher than the growth rate of agriculture in the previous 50 years. पिछले 50 साल में जो ग्रोथ रेट थी, ये भारत की आजादी के पहले 15 साल में 8 गुना तेजी थे. और आप कहते कि नेहरू ने जी एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया नहीं. नेहरू सेट द स्टेज फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन उनके डेथ के बाद होता है, पर ग्रीन रेवोल्यूशन की सारी तैयारी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हो जाती है, इंक्लूडिंग द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके बेसिस पे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है. इट वाज लॉन्च्ड इन नेहरूज टाइम. ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति तभी हो सकती थी अगर भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म हो चुका होता, अगर ट्रैक्टर्स आपके पास होते, अगर डीजल इंजन आपके पास हो, अगर डैम हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी हो, अगर रासायनिक खाद हो, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकती थी. और इन सब की तैयारी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे होती है. तो ये कहना
कि नेहरू ने निगलेक्ट किया और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ने आके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, ये बिल्कुल हिस्टोरिकली कंप्लीटली इट्स अ लाई. But let me quote to you, since you may think since I come from JNU, so I'm pro Jawaharlal Nehru University. Let me quote to you one of the most respected historians and agricultural economists, which every student of history and economics reads, Daniel Thorner. आप सब बच्चों ने पढ़ा ही होगा Daniel Thorner. Daniel Thorner क्या कहते हैं? बस एक लाइन कोट करके ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा. He says, it is said that in the initial 5-year plans, neglected agriculture. ये कहा जाता है कि इनिशियल 5 वर्षीय योजनाएं जो वो एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करती है. This charge cannot be taken seriously. The facts are, in India's first 21 years of independence, more has been done to foster change in agriculture, and more change has actually taken place than in the preceding 200 years. कहता पिछले 200 साल में जो चेंज नहीं हुआ, ये पहले 21 साल में आजादी के बाद एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है. I will leave it at that. Lastly, most importantly, Nehru realized that true sovereignty, असली आजादी तभी आ सकती है अगर if you are self-reliant in science and technology. अगर ये एरिया को आप, which was kept barren by the colonial rulers deliberately, if this area is not developed, we will still remain dependent. Even if you make your own machines, you'll still be dependent on the advanced world for science and technology. And therefore, in the 1950s itself, we think of the first few plans as plans which built only dams and steel plants. But this is the time that Nehru set up the IITs, the National Physical Laboratory, the National Chemical Laboratory, the Bhabha Atomic Research Center, the All India Institute of Medical Sciences. Every conceivable academic institution that you can think of was brought up at that time. What did Nehru do? He anticipated the knowledge revolution. Rather than denying him his role, do accept that he anticipated the knowledge revolution. It is because of this anticipation that India is today able to participate in the information revolution. आप सब जानते हैं that today the service sector is the leading sector of the Indian economy. Nearly half the Indian GDP is produced by the service sector. और service sector क्या sector है? It is a sector which is based on knowledge and information. So it is on Nehru's shoulders that we are building today's India, not against him, not despite him. As for the last item, the scientific temper, or the second last item, the less said, the better. We are making ourselves a laughing stock in the world. हंसती है दुनिया हमारे पे. आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में आजकल क्या कहा जा रहा है. हमारे बड़े से बड़े नेता डॉक्टर्स की मीटिंग में हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करते हुए कहते हैं कि हमको जी प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी आती थी, और कोई डॉक्टर उठ के चला नहीं जाता वहां से प्रोटेस्ट में. प्राचीन भारत में हमको प्लास्टिक सर्जरी आती थी. प्रूफ कि गणेश जी के नाक में हाथी का सूंड कैसे लगा, जरूर प्लास्टिक सर्जरी से लगा होगा. गवर्नर वेस्ट बंगाल के एक इंजीनियरिंग फेयर को इनॉग्रेट करते हुए कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. प्रूफ कहते हैं अर्जुन का जो बाण था ना, तीर, उस तीर के सामने न्यूक्लियर बॉम्ब लगा हुआ था. ही हैड अ न्यूक्लियर टिप्ड एरो. आप किस किस्म के बच्चे पैदा करेंगे, किस किस्म की साइंटिफिक टेम्पर पैदा करेंगे अगर इस तरह की माइथोलॉजी हमारे लीडर्स ही स्प्रेड करेंगे. अगर आप ऐसा स्प्रेड करेंगे तो आप कोरोना से भी गोबर, गोमूत्र, थाली, ताली, गंगा स्नान, ये सब करके उसको भगाने की कोशिश करेंगे. दिस इज गंगा स्नान के बारे में तो आपको पता ही है. बुल्ले शाह का बड़ा फेमस एक पोएम है. वो कहते हैं कि अगर गोते लगाने से ही अगर ईश्वर मिल जाते ना, तो डड्डुओं को और मछलियों को तो ईश्वर सबसे पहले मिल जाने थे. सिर्फ गोते लगाने से नहीं होता है.
साइंटिफिक टेम्पर की जरा जरूरत है, जिसको अब बर्बाद किया जा रहा है. Last, and this is genuinely the last, for Nehru, the issue of the poor. As I said, idea of India ka jo Garib Nawazi, the protection of the poor was a very important part. Us pe Nehru was very strong. As he put it in 1952, wo kehte hain, I'm quoting him, if poverty and low standards continue, then democracy ceases to be a liberating force. It must therefore aim continuously at the eradication of poverty. In other words, political democracy is not enough. It must develop into economic democracy also. And sirf political azadi se nahi hota, economic democracy bhi chahiye. And for that, he took giant steps. Jo maine bataye, land reforms, the community development program, the public sector, the popularizing of the socialist idea, एक समाजवादी सोच, ये सब नेहरू के एक बड़े मेजर कंट्रीब्यूशन थे. Most important, the maintenance of democracy itself was one of the biggest pro-poor thing that could be done. ये जो सोच है that democracy is not only a political thing, that it has a very important economic implication, was brought to the world, brought to our notice very brilliantly by Amartya Sen. उन्होंने एक कंपैरिजन किया. उन्होंने कहा देखिए चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी. नतीजा ये हुआ कि बिटवीन 20 to 60 मिलियन, 2 से 6 करोड़ लोग वहां पे मारे गए फैमिन्स में, और दुनिया को पता तक नहीं लगा. कहते हैं एक लोकतंत्र में ये हो नहीं सकता है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहां पे आपके हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां पे हजारों न्यूज़पेपर्स हैं, हजारों चैनल्स हैं, वहां पे कालाहंडी में एक डेथ होती है तो सरकार गिर जाती है. एक फैमिन नहीं हुआ आजादी के बाद, जबकि आजादी के पहले हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिन हो रहा था. तो कहते हैं डेमोक्रेसी इटसेल्फ, इट्स नॉट अ गारंटी फॉर द, इट इज द ultimate guarantee for the poor, that the poor will not be totally left out. So Nehru's ability to keep the democratic framework alive in a very difficult situation was perhaps one of the biggest pro-poor things that he could have done. Stark contrast today. I don't have to point it out to you. The whole world points it out. Floating bodies, dead bodies on the Ganga. Thousands of people walking at heat of 45 degrees with their children, with their sick parents, dragging them on suitcases, on cycles, for hundreds of miles to their villages. As I said, you know, it's not only one newspaper, from New York Times to Le Monde to Guardian, the whole world was shocked to see कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है. So we are obviously leaving out our poor. We have fallen. We are among the lowest in the hunger index. Lower than even Bangladesh and Pakistan. We are reaching the limits of sub-Saharan Africa. Half our children, half of the children in India are malnourished. और हम boast कर रहे हैं कि we have the largest number of billionaires. 100 billionaires हो गए आपके. कोरोना काल में आपके कुछ लोग की संपत्ति जो है वो 20, 25, 50 गुना बढ़ गई, और गरीबों की हाल पूछने वाला कोई नहीं है. Nehru's, I'll end with what Dr. Shankar started with. Nehru's fantastic effort to raise India from the mud and filth that was left behind by the British. This is not my phrase. Rabindranath Tagore, shortly before he died, he said, British rule will one day have to go because of the movement against it. एक दिन इनको जाना ही पड़ेगा. But when they leave, what mud and filth will they leave behind? क्या गंद और कीचड़ छोड़ के जाएंगे? क्या गंद और कीचड़ छोड़ के गए? मैंने आपको बताया अभी कि आजादी के पहले ही 30 लाख लोग तो भूखमरी से मर जाते हैं. आजादी के टाइम पे 92% of Indian women were illiterate. 84% of Indian men total were illiterate, अनपढ़. आजादी के टाइम पे average life expectancy was 30.
मतलब आम आदमी 30 साल के ज्यादा नहीं बचता था एवरेज। इसका मतलब जो गरीब था वो तो 10-15 साल में ही मर जाता था। ये हालत जो कि अब आपके 65-70 के पास पहुंचने वाली है, क्योंकि 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए लोग अब 30 साल के बदले 70 साल तक जीते हैं। परंतु द पॉइंट इज दैट एट इंडिपेंडेंस कहां से आप शुरू हो रहे हैं, किस गंद और कीचड़ में, व्हाट मड एंड फिल्थ वाज लेफ्ट बिहाइंड, फ्रॉम व्हिच आई थिंक अ ग्रेट एफर्ट वाज मेड टू लिफ्ट आवर सोसाइटी अप. What are we doing now? We are now pushing our people back into that mud and filth, back into ignorance, into obscurantism, into disempowerment, into unfreedom, and most of all, into communal hatred for each other. Let us learn something from our national movement. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपको सुनना हमेशा बहुत बहुत enlightening होता है. So before proceeding further, I would like to propose a very humble disclaimer here. Professor Mukherjee always tried to imbibe democratic values in all of his students, and I am one amongst them. So there is with great respect, a humble correction. Deshbandhu College is not established after the name of our beloved Deshbandhu Chittaranjan Das. Ratiram Deshbandhu Gupta was a Delhi freedom fighter, legislator, and journalist born in Panipat, and he was popularly known as Lala Deshbandhu Gupta. So after his demise in 1951, Deshbandhu College, after his name, was established. So thank you. Thank as you. always, my students have been my teachers. Thank you very much for correcting me. Sir, your grace, sir. So now the floor is open for the question answer session. I would like to request, if you have any question, please raise your hand and wait for your turn. आप अपना हाथ जो है hand raise करिए, or better you drop your question in the chat box so that we know about the length of the question, क्योंकि कई बार ये मतलब commentaries भी होती हैं, तो just to avoid those commentaries, so आप अपना एक करके hand raise कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक के साथ में कि वो उन्हें परमिट करें अपना माइक ओपन करने के लिए. Kartikeya, you can ask question, Kartikeya. Kartikeya, unmute yourself, please, and you can ask your question. Thank you very much, sir. I hope I'm audible. Yeah. First of all, I would like to thank Aditya sir for enlightening us about the achievements of Nehruvian era. And sir, actually, since you briefed almost all the achievements in regarding various aspects, including industrial and about agriculture, but recently there has been there is a statement which is popular these days on social media, given by a very prominent political personality. He said that कि अगर आज़ादी के वक्त प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो अगर होते प्रधानमंत्री उस समय, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब वो भारत में आता. तो क्या इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल गलती रही नेहरूवियन पॉलिटिक्स के दौरान कि ऐसा नहीं हो पाया, या फिर इट इज जस्ट अनदर स्टेटमेंट पार्ट ऑफ अ कैंपेन टू डिफेम नेहरू? ये तो there is no doubt about it. It is just defamation. करतारपुर साहब और ये कहाँ होता was, it is not determined by Nehru. It is determined by 100 years long communal development in India, जो late 19th century से शुरू होती है. ये communal division of the country, और जिसको बढ़ाया जाता है, अंग्रेज जिसको बढ़ाते हैं थ्रू मुस्लिम लीग, थ्रू हिंदू महासभा, थ्रू आरएसएस. जब ये बढ़ता है तो उसका अंतिम नतीजा भारत का बंटवारा है. ये बंटवारे का नतीजा है कि कौन सी जगह कहां चली गई. एक अननेचुरल डिवीजन हो गया इस देश का. ये जवाहरलाल नेहरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Partition is not Jawaharlal Nehru's responsibility. It is not the Congress responsibility as it is being claimed. Partition is because of people who promoted religious division in our country. And certainly Nehru and Gandhi did not promote religious division. Ankit Pandey. Yes, sir. Yeah.
Please ask your question. मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, yes. Sir, my question was, why Nehru ji not promoted armed factories? Kindly combat- repeat. Why Nehru ji not promoted armed factories to combat China and Pakistan at the time of independence? पहली Sir, बात Yes, तो yes, yes. ये सच नहीं है that Nehru ji did not build up the Indian defense system. If you talk to anybody in the armed forces, and for example, in the very making of the NDA, the National Defense Academy, of making a secular armed force, नेहरू का बहुत prominent role रहा था उसके अंदर. ये बिल्कुल गलत बात है. But to say that all that needed to be done was नेहरू ने एक आर्म फैक्ट्री बना देते और हम चाइना को बीट कर देते. Is it so simple? Is international politics that simple? To say कि अगर नेहरू नहीं होते, ये पटेल होते तो ये हो जाता, वो होते तो ये हो जाता. Let us have a genuine discussion on what was the international situation at that time, what were the capacities of China, what was our ability to fight China at that time militarily. अभी है आपके पास, चाइना आपके अंदर घुसे बैठी है 1 साल से. अब तो नेहरू जी नहीं है, क्या हमारे पास है शक्ति कि हम उसको उखाड़ के फेंक दें? ऐसा होता है? इतना सिंपल है. Things are not so simple. So let us not sort of accuse people like that. You know, if we are genuinely nationalists, let's look at a problem which is a national problem and seek a national solution rather than throwing stones at the other. Now, Sanjay Vaidya ji. Sir, forward policy was a failure, no counter question is permitted. No case. So now Sanjay Vaidya ji is invited to ask his question. Sanjay Vaidya ji, आप अपना mic open करें. Thank you, Saurabh bhai. Good afternoon, Aditya sir. It is honor for me to hear you. Sir, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और सब कुछ करने के बाद हम सब लोग अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की. आप क्या उम्मीद देखते हैं सर? आप एक एकेडमिक लॉरिटी के बतौर क्या उम्मीद देखते हैं कि लोकतंत्र को कैसे बचा पाएंगे हम, या बच पाएगा या नहीं? क्या ये नाउम्मीदी का दौर है? क्या एक हम अंधे युग में प्रवेश कर चुके हैं सर? जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, मैं आपके सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, उसका जवाब मैं थोड़ा सा घुमा के देता हूँ. जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो उसके थोड़े दिनों बाद ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे कार्डोजो, वो भारत में आए थे और कार्डोजो ने ब्राजील को फ्रॉम अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही मेड द ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी एंड इनटू ग्लोबलाइजेशन. तो वो जब भारत में आए तो उनको साथ डिस्कशन हुआ इंटेलेक्चुअल्स का, तो किसी लोगों ने उनको पूछा कि कार्डोजो साहब, आप तो बड़े लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी थिंकर हैं, आप कैसे ब्राजील को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके गए? तब उन्होंने कहा कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो. ग्लोबलाइजेशन, he said, is a fact. The issue you should ask is, how do we globalize? Do we globalize with what's going on? With sovereignty, with democracy, and do we globalize with a safety net for the poor? और उसमें उन्होंने कहा कि भारत का ब्राजील के ऊपर एक एडवांटेज है. ये आपके सवाल का जवाब में आ रहा है. तो लोगों ने पूछा कि भैया क्या एडवांटेज है? हमें तो आदत पड़ गई कि 200 साल गुलामी की, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. तो उन्होंने कहा आपका एडवांटेज ये है कि आपके यहाँ यू हैव अ tradition of resistance, a 100-year long tradition of resistance, you led by Gandhi and people like Gandhi. He mentions Gandhi and he was a Marxist. कहते हैं आपके यहाँ जो tradition of resistance है, ये आपके डेमोक्रेसी को बचाए रखेगी, आपके लिबरलाइजेशन को, आपके ग्लोबलाइजेशन को, आपकी आजादी को बचाए रखेगी. तो जो उम्मीद की बात है, ये हमारी ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस की उम्मीद है. ये आपने देखा कि चाहे कितनी भी दबाव, अंग्रेजी सरकार की दबाव, आप सोचिए सारे प्रेस फ्रीडम अब अगर चली गई तो अंग्रेजी सरकार के अंदर की ज्यादा थी, इससे भी कम थी. उसके बावजूद भी ये नेशनल मूवमेंट अब वहां पे खड़ा हो सका था.
तो आज क्या है कि क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? जितना भी ये कहना कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमको दबा दिया गया, ये बिल्कुल नहीं है। आपने आपके सामने आपने देखा ये फार्मर्स रेजिस्टेंस क्या है। ये बिल्कुल वही ऑलमोस्ट फॉलोइंग द गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस सिविल रेजिस्टेंस किया ना, और एक बिल्कुल दबंग सरकार को हिलाया ना, माफी मंगवाई ना। तो है हमारे एज आई सेड द जीनियस ऑफ द इंडियन पीपल इतनी जल्दी से दबने वाली नहीं है, एक तो इसलिए मेरे को होप है। और दूसरा कि हिंदुस्तान का जो ये कल्चरल हेरिटेज है जिसमें कि वी न्यू हाउ टू लिव टुगेदर फॉर सेंचुरीज। इस्लाम भारत में आता है जब अभी पैगंबर जिंदा थे, क्रिश्चियनिटी तब आती है जब शॉर्टली आफ्टर जीसस क्राइस्ट, और तब भी for thousands of years we were able to live together. This ability to live together, to produce our Kabirs, to produce our Guru Nanaks, to produce our Bulle Shahs, to produce our Amir Khusros, जो कि आपकी हिंदी की भाषा बनाते हैं, जो गाना उन्होंने 700 साल पहले लिखा है, छाप तिलक, वो अभी भी सब गा रहे हैं। तो ये जो कल्चर है वो आप एक मोनोलिथिक, आप एक सिम से हिंदुस्तान बना के इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिवीजन का भी जो एक बहुत बड़ा खतरा दिखता है और डेमोक्रेसी को जो खतरा दिखता है, उम्मीद यह है कि भारत अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं भूल जाएगा इतनी जल्दी में, और हमारे लोगों में ये सक्षमता कि ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना है ये खत्म नहीं हो जाएगी, यही उम्मीद है। अभी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हमारे कुलीग शाकिर हुसैन, तो शाकिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही। हाँ सर, बहुत अच्छा लेक्चर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को और भी जितने भी लोग ऑडियंस हैं इससे काफी आज के दौर को और नेहरू के दौर को समझने में काफी मदद मिलेगी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि नेहरू कोई कम्युनल नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कोई अम्बेडकराइट नहीं थे जो नेहरू को चैलेंज करेंगे, और ना ही वो ऐसे थे जो किसी भी ग्रुप को जो है अननेसेसरी चैलेंज करें या क्रश करने की कोशिश करें। फिर भी नेहरू का जो ये ईरा है या नेहरू का डिमोनाइजेशन जो हुआ उसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि नेहरू ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से उनका उस ईरा का या उनका दैत्यकरण किया जाए। कारण तो ये जिस कारण से गांधी जी का किया जा रहा है, क्योंकि जिस सोच को फैलाने की कोशिश है, देखिए सिर्फ मैंने कहा ना इलेक्टोरल विक्ट्री इज नॉट इनफ। आपने सरकार बना ली, सरकार के जो आपके लीडर है वो कहते हैं कि जी हम तो हिंदू राष्ट्र में विश्वास करते हैं, पर हिंदू राष्ट्र बन तो नहीं गया ना। लोगों की भारत अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि लोगों की मानसिकता तो नहीं बदल गई सारी। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डू नॉट थिंक दैट वी आर अ हिंदू राष्ट्र, कि मुसलमानों को मार दो। तो ये मानसिकता को बदलने के लिए जिस मानसिकता से भारत बनी है उसकी निंदा करना जरूरी है, उसको खत्म करना जरूरी है, उसको हिस्ट्री में से निकाल देना जरूरी है। इसीलिए तो नेहरू को वाइप आउट करने की कोशिश है, इसीलिए नेशनल मूवमेंट का मजाक बनाया जा रहा है। क्या तो कुछ था ही नहीं जी, भीख मंगे थे सारे, है ना। क्योंकि उसको आपको पहले डेनिग्रेट करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आम जनता जो गांधी जी को राष्ट्रपिता मानती थी, नेहरू को चाचा नेहरू मानती थी, तो वो कैसे हो सकता है ना। तो वो बदलने के लिए इनका जो डिमोनाइजेशन ये बहुत जरूरी है, और उसको रेजिस्ट करना हमारा आपका सबका काम है। So now Umang Gupta. So Umang, are you there? Yes, sir. Please unmute. Yes, please ask your question. Good afternoon, Aditya sir. सर मेरा क्वेश्चन है कि कई बार पॉलिटिकल लीडर और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट ऐसा किया था कि जो पीएम को सिलेक्ट करने वाले मेंबर थे उन्होंने अटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज किया था, बट जवाहरलाल नेहरू ने एंग्री हो गए थे और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से उन्होंने वो पद हासिल किया था। सर इसके क्या तर्क है आपका?
मुझे ये सवाल खूब फैलाया जा रहा है ये, इसीलिए मैंने शुरू ही अपना ये किया था कि 47 नहीं 42 में गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि नेहरू विल बी माय सक्सेसर। ऐसा कुछ नहीं था। नेहरू को चैलेंज, नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप को किसी ने नहीं चैलेंज किया था। और सर्टनली नॉट सरदार पटेल। सरदार पटेल और नेहरू की कॉरेस्पॉन्डेंसेस अवेलेबल है, आप देखिए। उनकी जो आपस में सद्भावना थी, एक दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करते थे। डिफरेंसेस भी थे, जैसे मैंने कहा, डिफरेंसेस के बगैर कोई इतनी एक विविध सोसाइटी कैन इट डेवलप विदाउट डिफरेंसेस। पर ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो एक को दूसरे को अड़ंगी मार के खुद पोजीशन पावर में आने की कोशिश में थे। उस वक्त पावर वाज अ मैटर ऑफ सर्विस, इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ getting something for your own benefit. It was a matter of trying to contribute to the nation. So we have to try and understand our leaders of that period differently from the way we look at the leadership of the current now. ये history में ये बहुत गलती होती है, that we back project the current reality into the past. आप जो politics अब यहाँ देख रहे हैं, आप कहते हैं ऐसी politics तब होती थी, नहीं होती थी। Movement की politics अलग होती है। उस वक्त politics meant sacrifice, meant losing something. Now politics has become trying to gain something. कि कैसे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिले, कैसे मेरे को सीट मिले, फिर मैं पैसे बनाऊं। ये पॉलिटिक्स उस वक्त की नहीं थी। इसीलिए प्लीज, फॉर गॉड सेक, लेट अस नॉट ट्रीट नेहरू, गांधी, पटेल एज कॉम्पिटिटर्स, यू नो, कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि कौन गद्दी में बैठेगा। ये उनके चिंता धारा से हजारों मील दूर था। ये दिस वाज नॉट देयर ऑब्जेक्टिव. Their objective was building a humane India, an India of which each one of us could be proud. Thank you. Suchish, what is her name? Suchishmita Banerjee. You can ask, please. Thank you, sir. So my question is, how can the communalist outburst from 1946 to 48 be compared with the present situation? As one can notice, the former was the result of partition and the latter is a deliberate attempt to distort India's long past for their own communal gains. Hence, I would like to ask that can we obtain a substantial solution to curb the present problem from that era? Along with that, sir, I just want to ask, what is the area of convergence between socialist India and the premier Nehruvian economic policy, and what has made it compelled to be different in 1991 to change its course? Sushmita is the name? Sir, it is Suchishmita Banerjee. Suchishmita. Okay, Suchishmita, very nice question. Very difficult question. You have asked me a whole range of questions. Let me see how quickly I can answer them. The comparability between the partition and today. The communalism at the time of partition was not the result of partition. Partition was the result of communalism, which had a long history before that. Particularly since the 1920s and 30s, it became increasingly a mass phenomenon. And that is what led to the partition and its horrors. And that had to be fought. And it was, as I gave you examples of how it was fought. How even with his death, Gandhiji fought it. I would say that it is his assassination which shamed people into realizing that this is what this communal hatred leads to. It leads to patricide, killing your own father. Right? So comparability is of course there. The same situation has again been created. And it has not got created in one day. It has got created. That is why we wrote the book called the RSS School Textbooks and the Murder of Mahatma Gandhi. It has been created by school textbooks in which hatred is taught about other communities. They are described as foreigners. They are described as people who are violent, etc. You can hear speeches all around which are full of hatred. So there is a genuine attempt to do the same thing again. So I think it requires the same sort of movement
that was built up at that time to resist it. If you do not build it up, we shall be consumed by this fire. The second question about Nehruvian socialism. I don't know whether I got your question fully correct, but let me see. If I do not answer your question, you can, if Saurabh permits, maybe have a come back at it. You see, the socialist vision, broadly defined, is what Nehru promoted. What differentiated Nehru from the communists was that he did not promote a narrow definition of socialism, in which the essential part was, as I said, a pro-poor orientation. How it will be done, he did not believe in a violent imposition of socialism. He was one of the first in the world to go away from Stalinism. By the late 30s, 1930s, he goes away from what is called Stalin Marxism. And he says there is no socialism without democracy. In other words, he does not accept the Soviet Union model or the China model of imposing socialism by force, or maintaining it by force. He said socialism must be socialism of 90%. That is one thing I wanted to say about Nehru's socialism. As for 1991, 1991 is not an abandonment of socialism or of the Nehruvian ideas. 1991 is a result of a changed global situation. The nature of world capitalism had changed. The nature of the Indian economy had changed. And we were ready now to participate in the globalization process with some advantage to ourselves. That is, 1991 did not mean giving up of self-reliance or giving up of a pro-poor orientation. In fact, the results of 1991 initially were exactly the opposite. Poverty declined, and our ability to bargain with the world actually increased. Our self-reliance did increase. So there is a difference. There is no abandonment of Nehru in economic reform. Economic reform was pushed by a large number of Nehruvites. And do remember that even the socialist countries and even communist West Bengal at that time were pushing for economic reform. There was a consensus on economic reform at that time. So Akash Singh has put up a question in the chat box. I'm reading his question, sir. So Jawaharlal Nehru once quoted media as the watchdog of democracy. But as today we are seeing how most media platforms are being influenced, biased for a particular party, how it is affecting the Nehru's idea of democracy and affecting ideology of people. Good question. It is very true. There is no doubt about it that the media today is very different from the media during the national movement days. It's a new phenomenon where the media is owned by corporates, and the corporates are being controlled, and therefore we have a controlled media. But I gave you therefore the example that so was the media controlled under the British, and people still managed to communicate. It is up to the genius of the Indian people. Look at the resistance in the media today, even in the vernacular media. Earlier, you had seen the spread of communalism in regional languages in a very big way, in Hindi in a very big way. But now listen to the electronic media in Hindi. Hear the YouTube channels of independent people, one-man shows often, where they are questioning, they are showing courage. Kahi jail mein bhi dale ja rahe hain, but fir bhi people are speaking up. As I said, you cannot suppress an entire people. People love their dignity. They love their independence. They're not willing to become automatons just for 2 pieces of silver. ये नहीं होने वाला है इस देश में. So Dr. Lakshman Jain wants to ask a question. So are you there, Dr. Lakshman Jain? Are you there, Dr. Lakshman Jain? Sir, in the meanwhile, you can take questions from chat box. There are so many questions in the chat box. Mani Mugdha Sharma has dropped a question in the chat box. Saurabh, can I ask question? Yes, sir. Sure, sir. Please. सबसे पहले मैं प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी को अपना आदाब पेश करता हूँ. प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने हमको पढ़ाया है और हमने इन विचारों का इन्वेस्टमेंट किया है. मैं जेएनयू में ही सही पढ़ा हूँ
तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार लेक्चर प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने हमको दिया। मेरे एक दो सवाल हैं सर। एक तो ये कि नेहरू ये मानते थे कि भारतीय राष्ट्र में विभिन्न तत्वों के संश्लेषण से एक साझी राष्ट्रीयता का निर्माण होगा, और उन्होंने 1937 में मुस्लिम जनता तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट जनसंपर्क प्रोग्राम भी बनाया था जो फेल हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि हम राष्ट्रीय आंदोलन से इतने दूर आ गए हैं, उसकी ताजगी अभी हम महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब नेहरू जब देश को बना रहे थे या देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब राष्ट्रवाद एक मंत्र था रिबेलियन का। लेकिन अब जो है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो शायद राष्ट्रवाद की विरासत से हम बहुत दूर जा रहे हैं, और सामाजिक आर्थिक सभी कॉन्टेक्स्ट में ये समस्या सामने आ रही है। एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था। प्रोफेसर पार्थिव चटर्जी ने कॉलोनियल वर्ल्ड एंड नेशनलिस्ट इंटेलिजेंशिया में एक जगह लिखा है कि गांधी के लिए नेहरू ने कहा था कि सो फार मोबिलाइजिंग ऑफ द मासेज इज कंसर्न, यू हैव अमेजिंग नेक, बट यू आर ए ऑब्सक्योरेंटिस्ट इन योर अप्रोच। तो ये डिस्टेंस और प्रॉक्सिमिटी कि मैं तुमको ब्लैंक चेक देता हूं, कहते हैं नेहरू गांधी के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि आप ऑब्सक्योरेंटिस्ट हैं। तो इस पे थोड़ा रिफ्लेक्शन दीजिए सर, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। Thank you, Lakshman. Lakshman, for the viewers, was one of our most brilliant students. He, despite being visually challenged, was the topper in our class. We were very proud of him, and we still are. And from your questions, it is clear that you know the answers to the question that you are asking. These are very profound questions. But it's more a statement, Lakshman. It is true that the glow of nationalism is no longer there, which was available to the early leaders of independent India. That has to be replaced with another vision. So therefore, the going back to our history is so important. It cannot be the same as the national movement. We are not fighting the British anymore, but we can learn some lessons from it, and a commitment to a value is what is very necessary, and that has to be evolved. I totally agree with you that we can no longer rely on the lasting glow of the national liberation struggle, but we can certainly draw from it, bring it to our attention. People are able to draw from much older traditions. The Chinese draw from Confucius even today, People can draw from Buddha. So why can't we draw from Gandhi? Buddha ke kam saal ho gaye hain kya? Why can't we draw from our own national movement? That is one. As for the दूसरी आपने जो सवाल करी थी, I forgot to note it. मुस्लिम जनता को एक करने का जनसंपर्क अभियान शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल। नेहरू ने definitely he tried to create the mass contact program, but उस वक्त communal forces with the support of the British were able to negate that effort. It did not succeed. But as for Nehru's comment on Gandhi, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि Nehru was like this quarrelsome young boy who would argue with his father, and Gandhi ji treated him like that. And that's why he said, मैंने जो शुरू में quote किया था, कि he may argue with me, he may say this, he may say that, but ultimately he'll speak my language. Nehru हर एक स्टेप गांधी के स्टेप को क्रिटिसाइज करते थे। वो 1920 में आपके ये जो विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ चौरी चौरा के वक्त पे, फिर गांधी अरविंद पैक्ट के टाइम पे, he would be among the critics and say कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, गांधी जी वो, he would be criticizing Gandhi on a whole number of things. But over time, if you look at Nehru's writing itself, he self-corrects and says that this is where I was wrong, this is where Gandhiji was right, etc. There are certain views of Gandhi on, on vegetarianism or this, that, and the other, which Nehru did not like, and he had every right to express his difference with that. Having an admiration for a person doesn't mean, and to realize the substance of Gandhi. Nehru's credit was that he realized what was the crucial element in Gandhi, and built on it. For example, he was among the first to say that what the difference that Gandhi ji made to our society was that here was our society completely submerged in fear of authority, fear of the British, fear of the police, fear of this. And then he says, then Gandhi came and lifted this fear,
So that was Gandhi. That is what he built on. This lifting of fear, the resistance, the ability to resist injustice of any kind, his progressive ideas on gender, power to the women. I mean, there are 100 things you can pick on Gandhi. But if you want, there is no human being is perfect. Gandhiji was not God. I'm sure there were elements in Gandhi's thought which would appear unmodern to Nehru, and he expressed them. And as good democratic people, we should accept it. And so did Gandhiji. Great. Thank you so much. तो सर अभी हमारे बहुत ही पॉपुलर हमारी फैकल्टी, हमारे कुलीग सीआर मीना साहब ने एक चैट बॉक्स में एक अपना सवाल डाला है, हीरोइज्म से लोकतंत्र को क्या क्या खतरा हो सकता है, इन खतरों को कैसे टाला जा सकता है, या कौन से टूल हैं जो हीरोइज्म के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे? मेरे हिसाब से वो कल्ट पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हीरो होना बहुत जरूरी है, आइडियल्स होने बहुत जरूरी है, पर जो आइडियल्स हैं हमारे, वो खुद कभी हीरोइज्म को नहीं विश्वास करते थे। ना गांधी जी, ना नेहरू। मैंने नेहरू के आपको बड़े सारे एग्जांपल्स दिए। वो खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कल्ट, ही से सीजरिज्म शुड नॉट कम इनटू इंडिया, अपने बारे में कहते हैं जब अपने आप को क्रिटिसिज्म करते हैं, दैट ये कल्ट के खिलाफ लड़ने की उन्होंने खूब कोशिश करी है। और आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, those who do not believe in democracy, do exactly the opposite. They try to build a cult about themselves, put up their own photographs everywhere, you know, for whether, even if it is a vaccine, your photograph will appear, etc., etc. This building of a cult is a completely non-democratic, different direction of movement. You are absolutely right. Heroism is very different from having heroes. We should not. We must question that. Now I would like to request Ashutosh Kumar, our colleague in the Department of History, to ask his question, please. Namaskar, sir. Anyway, I was also a student 1993. Yes. 95 batch. Cap call, I remember the concept that you taught us. सर एक सवाल स्टूडेंट की तरफ से ही आया था। रिमेम्बर किसने पूछा था कि 62 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हमारे पास होती तो शायद हम 62 में चाइना से नहीं हारते। थोड़ा सा हम उसको एक डिफरेंट प्लेन पर हम चाहते थे, शायद आप थोड़ा सा कमेंट आप करें। हम 3 मेजर युद्ध लड़े, 62 में, 65 में, 71, 72, जो भी कह ले 71। दोनों 65 में और 71 में हमें सोवियत संघ का साथ मिला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कह ले, एक सोवियत संघ का साथ हमें मिला और हम दोनों में विजयी हुए एक हद तक। 71 में तो पूरी तरह विजयी थे, 65 में हम किस हद तक विजयी थे वो डिबेट का मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एडवांटेजियस पोजीशन में आए थे। शिमला समझौता फिर उसी के तहत हुआ। और 62 में हम फेल कर गए। ठीक है, हमारी तैयारी उतनी नहीं थी और हम हिंदी चीनी भाई भाई और तमाम तरह के नैरेटिव हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, हम पढ़ाते भी। इस पूरे प्रकरण को हम क्या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हमें समझना नहीं चाहिए कि उस समय 60, 62, 61, 62, 63 का जो समय था, ये शीत युद्ध का अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 62 का वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो एपिसोड था, जिसमें पूरी संभावना बन रही थी कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। तो 62 में अगर आप सिचुएशन हम देखें तो सोवियत संघ और चीन के पीछे सोवियत संघ आ जाता है। सोवियत संघ के पीछे चीन कहता है कि मेरी पूरी 7 लाख की आर्मी आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए, हम उनके साथ है। तो क्या ये चीन और सोवियत संघ या सोवियत संघ की चीन के साथ बैकिंग, चीन की बैकिंग, क्या ये कहीं उस पर असर पड़ता है क्या कि कहीं भारत के साथ नेहरू की इतनी नजदीकियां होने के, क्रुश्चेव से भारत की नेहरू की बहुत अच्छी नजदीकियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ओवरऑल सोवियत संघ से था, लेकिन क्रुश्चेव के साथ भी नेहरू की नजदीकियां थी।
तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इस तरह का बन गया कि हम चीन को उतनी ढंग से टैकल नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय सोवियत संघ को भी चीन का समर्थन चाहिए था क्यूबन मिसाइल संकट के ऊपर। मेरा प्रश्न क्या इसको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के में भी देख सकते हैं इस पूरे प्रकरण को? बिल्कुल आशुतोष, यू आर एब्सोल्युटली राइट. It should be seen only in that perspective, not in the perspective of one man versus the other. कि नेहरू अगर ये करते तो वो हो जाता. It was not in Nehru's hand. What was Nehru trying to do? He was not trying to build a militaristic India after independence. His priorities were different. Industrialize, develop, meet the immediate needs of the poor, keep tensions low as possible, and build an Afro-Asian solidarity. His friendship with China, his effort to build friendship with China was indeed to build, as you said in foreign policy terms, to build a counterpart to the Cold War situation. It was in that effort that Asian solidarity, Afro-Asian solidarity, third world unity, and these were laudable objectives. नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी पोस्चरिंग रही है वो सारी दुनिया मानती है अब तक भी दैट इट वाज आउटस्टैंडिंग. अटल बिहारी वाजपेयी भी वही करते थे. नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को कोई किसी ने अभी तक उल्टा नहीं कर दिया है. नेहरू जी को कितना मर्जी गाली दे लो आप. इम्पैक्ट ऑन वियतनाम में जो नेहरू ने जो वियतनाम में स्टैंड लिया, इट इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर. उस वक्त लोग पीपल सेड दैट आप तो इतने गरीब देश हो, आप तो यू आर इन अ बेगिंग बोल इमेज, हु आर यू टू एडवाइज द होल वर्ल्ड कि क्या करना चाहिए, कोरिया में क्या होना चाहिए, वियतनाम में क्या होना चाहिए. तो नेहरू का फेमस स्टेटमेंट था that we may be poor, but who has told you that the poor do not have a voice? So the fact that we took independent positions and could take independent positions must be taken into account. As for China is concerned, Nehru's effort to build bridges with China was a laudable effort, undoubtedly. But his giving, for example, one of the issues that people don't talk about, his giving refuge to Dalai Lama, the issue of Tibet, that is one thing which angered China very much. अब क्या कहेंगे उसमें? Should he not have done it? You see, these are not easy matters that emerged. So it is not as if कि एक armament factory और बन जाती तो हम चाइना को defeat कर देते. जैसे आपने अभी कहा, look at the power breakup in the world at that time. Was taking a very offensive position vis-a-vis China a very sensible thing to do at that time? Is it a sensible thing to do even today? Are we doing it? अब तो हम इतने शक्तिशाली हैं, हम तो कहते हैं हम पता नहीं क्या कर सकते हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम डोकलाम हुए कितने महीने हो गए अब? जमीन वापस मिली आपको? आप नेहरू की स्टेटमेंट कोट करते रहते हो कि नेहरू ने कहा था कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज, और मेरे सिर पे बाल नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा. आप क्या कर रहे हो? So realities, foreign policy realities are very complex realities, and I said they should not be individual centric. No nation ever grows if you handle your foreign policy in this manner, and it was not. Even, as I said, non-Nehruvian governments till very recently did not switch in the foreign policy angle away from the Nehruvian path. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो that the context must be taken into account, that in the given context, in the global situation at that time, what were the possibilities of what Nehru could do? And he answered all these questions in Parliament. 62 के बाद आप देखिए, look at the parliamentary debates. He didn't run away from these questions. He answered to the people and he tried to carry the people along with him on that. He didn't hide any facts. He didn't say कि ये नहीं हुआ, कि चाइना अभी हमारे अंदर नहीं घुसे बैठी है. Thank you, Ashutosh. I didn't recognize you. You're looking very much more prosperous. You are on mute, Saurabh sir. Okay, sorry. So I am saying that, it is very good to see that even after all kind of, vendetta and vilification of Nehru is one of the most, popular, subject to be discussed here. And
many people had dropped their questions in the chat box, and I think almost 10 people have already raised their hands. So it is already 1:30. So PM in the afternoon. So I if would. you permit me, sir, may I ask? Saurav. Yes, sir. एक नेहरू एंड सुभाष का एक क्वेश्चन है, वो ले लो चैट बॉक्स में. अच्छा. नेहरू एंड सुभाष सर, मैं वही जी जरूर सर, मैं चैट बॉक्स से वो क्वेश्चन लेता हूं. अगर आशुतोष आप पढ़ रहे हो सवाल तो आप जी जरूर. आशुतोष, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में. अभिषेक. Just a minute, sir. सुभाष बोस पर सर, अगर आपको दिख रहा हो वो क्वेश्चन, तो आप अगर उसको रीड आउट कर दें. देख लेता हूँ. I'll just look for it. One moment. I wanted to ask you to throw light on the relationship of Subhash Chandra Bose and Nehru. Yes. There are rumors about the involvement of Nehru in Chandrasekhar Azad's death. Could you please elaborate more? ये तो नया rumor सुना दिया आपने. अभी तक तो हम सोचते थे कि नेहरू जी ने सिर्फ सुभाष बोस को मरवा दिया. So this is precisely the kind of thing I'm saying, that there are limits to what levels of pettiness we can allow intelligent people to deal with. Nehru and Subhash were great personal friends. When Kamala Nehru dies, at the bedside was Subhash Bose. सुभाष बोस के घर में अभी तक एक कमरा है, जाके देखिए कलकत्ते में, जिसका नाम ही है नेहरू का कमरा. Whenever he would go to Bengal, Calcutta, he would stay in Subhash Bose's house. They were ideologically inclined, similarly inclined in a number of areas. For example, their positions on the left, their position on communalism, on secularism, etc., their reach to the youth, इसमें कोई doubt ही नहीं है. But they had their differences. Nehru did not agree with Subhash Bose's tying up with the fascist powers in order to beat the British. He did not agree with the thing that your enemy is my friend. So that is a legitimate view. Large number of people did not agree with that, but that did not diminish in Nehru's mind Subhash Bose's greatness. I mean, if you read, both Nehru and Gandhi talk about Bose. Even when Bose leaves the Congress, as I told you, in 1938-39, after that, when a decision is to be taken on what position India is to take on the war, etc., and Gandhiji insists that call Bose. We want to take his opinion also. These were the kinds of leaders we are talking about, that they had differences, but yet they could have deep bonds. And in Nehru and Bose's case, they were personal bonds. Nehru ensured that after Subhash Bose's death, that his daughter got a pension and got enough funding in order to be able to get educated, etc., etc. But to now this deliberate attempt, and through spreading lies that there are files which will show all kinds of complicity, etc. वो फाइल तो निकले नहीं अभी तक. कितने महीने हो गए? 2 साल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नेहरू की कुछ फाइल्स निकलेंगी, आर्काइव्स खोली जाएंगी, उसमें से पता लग जाएगा कि नेहरू ने क्या क्या गलत काम किए हैं सुभाष बोस के. I mean, this is absurd. These are lies, and this should not be permissible in any civilized society. Manimugda sir, you can ask your question, please. Unmute yourself. Is he there? He is Manimugda here. Sharma? He is here. So that would be the last question, okay? Yeah. I don't think he is there. No, he is here. He raised his hand. It has already raised. Manimugda Sharma, you can ask your question. Are you there, Manimugda?
I am. Okay, Hi. sir, please. Very sorry because my microphone was muted. I was trying desperately to turn it on. No problem. Please. Thank you very much for giving me the chance. A great lecture, Professor Mukherjee. It's always a pleasure to hear you. I have a question, more a request. The right wing has created this mythology that the Indian Constitution was not secular originally, that it was a top-down imposition later by Indira Gandhi. And this is obviously that addition of the word secular in the preamble. Now, we know that even without that word, the Constitution was always secular. Could you shed light on Pandit Nehru's position on that? And also, Pandit Nehru seems to be forgotten in the whole constitution-making process now. And Baba Saheb Ambedkar is now singularly credited for that. But Pandit Nehru had moved the objectives resolution. And there are historians like Benjamin Zachariah who say that the right wing was completely defeated in that move when he passed the objective resolution. So could you shed some light on Pandit Nehru's role in constitution making? Yeah, you're absolutely right. You know that firstly, any reading of the Constitution, even an elementary reading of the Constitution, will show that without using the word secularism, it is secular. That the very first few lines will tell you that it does not distinguish on the basis of creed, religion, language, gender, caste, etc., etc. It is intrinsically secular. You're right that the word secular got added later on, but that didn't mean that the Constitution was not secular. As for the making of the Constitution is the distillate of 100 years of Indian national liberation struggle. It is not made by any one man. So this Ambedkar was made the chairman of the drafting committee by Gandhiji's insistence in order to make use his talent as a lawyer, and B, to make the Constitution inclusive, because there was this known difference of opinion on Gandhi and Ambedkar, and that was the greatness of the man. He says that he said, bring Ambedkar into the drafting committee as chairperson. But if you read the 1931 Karachi resolution, the resolution on fundamental rights, the essence of the Constitution is already there. It was drafted by Nehru, vetted and corrected by Gandhiji. So it is a Nehru-Gandhi document, which is already there for you, and the best writers on the Constitution have never seen the Constitution as made only by the Constituent Assembly, and certainly not by the chairman of the drafting committee. The Constitution was an evolving process over a very long period of time. That's why I mentioned Tilak in the 1890s. The issues are being raised from the 1890s. And the facts of the national movement, in the nature of the movement itself determines much of what the Constitution is. Why is it that we did not have to have a debate whether women will have a right or not? After all, every other country in the world took a long time, to bring women into, give equal voting rights to women, isn't it? Suffragette movements had to be done. The United States in the 1960s is still debating whether the blacks will have a right to vote or not. Now, these issues did not emerge because of the nature of the national movement. In the 1920s, Gandhiji puts women in charge of the most difficult part of the struggle, which is the boycott and picketing of liquor shops, of etc., etc. He says, I have brought women out of the kitchen. Your job is to keep them out of that. So you can't have Sarojini Naidu's and people of that stature leading the Congress and at independence debate कि अच्छा आपको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन के बेसिस पे मिलेगा कि किसके बेसिस पे मिलेगा, जबकि आपकी मूवमेंट सारी पेजेंट्री के कंधे पे हो रही है, जबकि उसमें औरतें शामिल हैं, जबकि गांधी जी 2-2 साल पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, नेशनल मूवमेंट छोड़ के कहते हैं कि मैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ूंगा. Until we fight against untouchability, we fight against caste oppression, we do not have a free India. So are we going to have caste restriction in our constitution? Are we going to have education restriction? So it was very much, as you very correctly said, that it is a prolonged result of a prolonged effort in which Nehru undoubtedly played a very important role, but he was certainly not the only deciding person.
Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It is always, difficult to wind up such an insightful session. So, but as the moderator of today's, lecture webinar, I will have to formally proceed towards the end of seminar. So now I would request our senior colleague, Professor Subrita Khatri, to offer a vote of thanks. It's I've already had during this lecture more than 3 or 4 people acknowledging Professor Mukherjee as their teacher. And as I proceed to give a vote of thanks, it is my honor that I also am going to thank my teacher, one of my great teachers from Delhi, from JNU during my MA days. And I would not take after, such a remarkable talk and a remarkable discussion. There is not much to be said, and the impact gets diluted. But I do want to thank Professor Mukherjee by saying that, if I'm not wrong, it is more than quarter of a century that Professor Mukherjee has been committed to his, a dedicated study of the Indian national movement, its strengths, and also at times its weaknesses. And I think what is important for us to remember is that these were elements which are making us what we are even today, even when we are denying it. And there are voices that a historian like Professor Mukherjee will remind us what our national leaders stood for in whatever ways, however, they articulated. And one important thing about Pandit Nehru, I would say, is that if we read his works, there is a lot on not only his commitment to science, nation building, but his commitment to developing a scientific temper. And I think in many ways, Professor Mukherjee's talk has pointed out for the need for that scientific temper, which will make us more humane and kind, and make this nation a more humane and kind nation. With these words, I want to thank Professor Mukherjee. I want to thank our department, Dr. Ashwini Shankar, and all our young colleagues who have been working tirelessly to organize these very stimulating lecture series that we have started in the history department of Deshbandhu College. I would like to thank our principal for giving us the space and the freedom to discuss and debate openly, fearlessly. I really want to thank him for that. And above all, I want to thank our students who have been coming for these. I know today is a Saturday, and students normally on a Saturday might want to just relax and not do anything, but they have been very active and informed participants in the discussion, and we are very grateful to them to make this series what it is becoming, something people are looking forward to every 15 days. With this, I thank everyone for today's lecture, Professor Mukherjee, students, and everyone. Thank you. I request my colleagues to turn on their cameras for a photograph session with Professor Mukherjee. Please turn on your cameras. All my colleagues are requested to turn on their cameras. Chalo, jaldi karo. Omkar, you can. Subrita ma'am. Yes. Your camera on karo. Shakir. Done, sir. Done, Vikas. Okay. Thank you so much, Vikas. Thank you. Thank you, Professor Mukherjee. We'll have a whole lot of lectures even on other platforms. And
I look forward to meeting you there also. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Saurabh. It was very enjoyable experience. You have a very good college and your students are amazing. Good questions, I must say. I really enjoyed myself. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Sir, announcement for the next lecture. The next lecture in the series will be held on 25th. Yes. At 2:30. Yeah. At 2:30 by Professor Dilip Menon, who was our colleague in the Department of History, University of Delhi, and now in South Africa. Just inform about the topic. So he is coming to deliver a talk on nation and nationalism from the ocean. Okay. 2:30. We'll meet again on 25th at 2:30. Thank you. So thank you. Thanks. Okay. Thank you, sir. Thank you. Should I end? Yeah.